स्पीकर यार कल करवा देना उसको, पक्का है। तो ये मैंने पहना किस लिए? हाँ, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के लिए, ओके। चलिए, सो इट्स ऑन ना, सब कुछ ऑन है। मेरे को यूट्यूब वो खोल के रखना है क्या, लिंक? ये ऑन नहीं हुआ है लाइव वाला। जस्ट अ मिनट सर, फर्स्ट क्लास है, 2 मिनट लगेंगे। नहीं, लाइव वाला ऑन नहीं हुआ। हाँ, ठीक। All right, guys. So good afternoon, everyone. I'm Atul Garg, your faculty for ethics, integrity, and aptitude. So today, basically, we are going to start this crash course. Okay. And first of all, let's try to understand the objective of this crash course also. Like, what's the basic purpose of designing it? See, basically, it is for those students who have done their foundation courses or who have done their ethics by themselves. Okay. So for this course, especially some prior first-hand information about ethics is required. I mean, if you're completely new to the ethics, then I think this course will confuse you because I'm going to do this course in a question answer format. All right. So basic idea about ethics, idea about syllabus you should have. Okay. So basically, what this course is about, it is about the quality enrichment, like what you have done, how you are able to apply it in the question answer format. It is also for the current affairs, some recent current affair problems also I will discuss in the class. Plus, it is to refresh your memories. Okay, like most of you have done your ethics courses way back, 2 years back, 3 years back. So it will refresh your memories, and when you listen to something, then you are able to retain it also in your memory. It goes into your long-term memory. So for refreshing memories, for retaining it, and most importantly, answer writing practice. Okay, now what I have done in this course is that the handout would be provided to you in advance. Like this handout is there, but I uploaded it on the website 2 days back only. So the first class is an exception, but from tomorrow, I would like you people to do some brainstorming of the questions which have been given. Okay, do some brainstorming, try to write some answers also. And then next day, I will discuss them in the class. So I think this is how these classes would be best fruitful for you. Okay, in the end, I will provide you some model answers also. Got it? So this is the basic idea कि आंसर राइटिंग करेंगे, करंट अफेयर्स प्लस क्वालिटी इनरिचमेंट आपका होगा. आर यू गिविंग मेंस? एनी? All of you are giving mains? Most of you are giving mains this time. Okay. So especially for you guys, I mean 6-7 days, I think most of the students who are writing mains, they are the one, I mean, and if they are sitting in the class, it means they haven't done much about ethics. Okay, and they're not getting then confidence also in ethics, right? So for that confidence purpose also, I think this course will help you out. Now, without wasting any time, let me go to the section A of our first handout. Okay, what I have done in this course is that the first 3 handouts are divided on the basis of syllabus. Like all of you know that our syllabus is made up of 3 disciplines: psychology, philosophy, and public administration. Yes. So basically, unit 1 and unit 5 is of philosophy, moral philosophy. So the first handout is related to these 2 units. Second handout is related to psychology, unit 2, 3, and 4. That is attitude, aptitude, and emotional intelligence. And handout 3 is for public administration, that is unit 6 and 7, ethics in administration and probity in governance. Okay.
So this is how I have divided them. 3 handouts would be given. And the fourth handout would be of general questions, which includes information from all the units. Then after these four, I will do some current affairs with you. And after that, one test I will give you. Okay, you have to write all the answers for that. And then that test I will discuss in the class itself, plus model answer also I will give to you. So basically this is how around these 6, 7, I think 7 से 8 भी हो सकती हैं, around 8 classes would be done. Okay. Now, as you can see in the handout, the first unit. Just a minute. Pen is not working. अच्छा अच्छा, इस पे पेन नहीं चलेगा क्या? कहाँ से होगा? यहाँ से? दिस, ये वाला? अच्छा, got it, ठीक. So basically this handout one, syllabus 2 units are there, ethics and human interface. I will give you an idea that what this syllabus is about. The first unit is essence, the first topic is essence, determinants and consequences of ethics in human actions. What do you understand by essence? Essence क्या होता है? Sorry? Properties, main characteristics. Okay. Crux, significance, summary of something, indispensable properties. Can you name some properties of ethics? They are abstract, they are subjective, they are contextual. Basically they are affected by both the personality as well as the environment of an individual. Then human beings affect ethics as well as get affected by ethics. Human beings are interrelated to, ethics are interrelated to each other. They change with time also, yes. So these are all basic properties. Okay, laws are minimalistic, ethics are maximalistic. So basic properties are there. So this is what essence is about. Then determinants, what do you mean by determinants? Factors which determine the ethical setup of an entity. Okay, like tell me, for a civil servant, what determines his ethical setup? His code of conduct is there, code of ethics is there, then what else? What is the most important thing? Most important thing, constitution. Constitutional morality is supreme for him. Okay, after that, yes, laws are there, code of conduct, code of ethics is there, then society's ethics, social ethics, democratic ethics, international values. Are you getting my point? So these things also affect his ethical setup. And most importantly, his own conscience. Conscience भी तो है ना उसका. So ये आपका आंसर हो गया इसके अंदर. So determinants, consequences of ethics, you understand? Good consequences will happen when ethics are there, and bad things will happen when ethics are not there. And this is a topic from where maximum questions have been asked. Consequences of ethics. Okay, so do prepare this topic properly. Consequences. Then dimensions of ethics. पढ़ा था ये? Basically these are the different elements of ethics. Okay, or facets of ethics, I would say. Okay, or context, perspectives of ethics. All these things comes under it. So basically 4 dimensions are there. The first is meta ethics. Meta ethics क्या deal करता है? What ethics are. Okay, and what are the fundamental problems of ethics? क्या है fundamental problems ethics के? Tell me. Few debates. What is the right thing to do? ये बाद में आता है. In fact, fundamental debates क्या है ethics के? Sorry? What in fact is right? See, basic meaning of right and wrong. Basic meaning of what virtue is. Like there are certain debates.
in ethics? Universalism versus relativism. This is a big debate and it is known by different names. Means versus ends, and reasons versus emotions. और एक और क्वेश्चन आता है, why be moral? So all these debates are discussed under this meta ethics thing. And you should be clear cut about these debates. जैसे means versus ends है. Tell me, means values are more important or end values? हाँ. Ideally you will write that both are very important. But why you are giving this exam? For being a civil servant. And for civil servant, which values are more important? Means are more important. Why? Because he is associated with implementation of policies. Are you getting my point? But sometimes even bureaucrat has to go for the end values. Okay. So what should be the principle which should guide this thing? The principle is that mean values should be the norm and end values should be the exception for a public servant. ये लिख लो एक लाइन. For a civil servant, means are see देखो, क्योंकि वहां पे the evaluator will is asking you a clear cut answer कि means important है, ends है. You will write both of them, but in the end you will show a slight tilt towards means values. Okay, you know, for a civil servant his means are more important. Philosophies which are associated with means. डिओन्टोलॉजिकल में बताओ, थोड़ा स्पेसिफिक आंसर दो. इन एग्जाम ऑल्सो यू हैव टू राइट मोर. निष्काम कर्मा इज अ मीन्स ओरिएंटेड. ड्यूटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया? कैंट ने. whenever the means approach come, Kant and Nishkam Karma, these are the two most important things. और एंड बेस तो है ही, यूटिलिटेरियन अप्रोच है, कॉमन गुड अप्रोच है, नेशनल इंटरेस्ट अप्रोच इज देयर, मेनी अप्रोचेज आर देयर. सो मीन्स वर्सेस एंड्स यूनिवर्सल है, रिलेटिव है. दिस डिबेट आई विल डिस्कस लेटर ऑन. रीजंस हैं कि इमोशंस हैं. एथिक्स आर अफेक्टेड बाय व्हाट? रीजंस और इमोशंस. again this thing is debatable. So how to resolve these debates I will discuss in the question. This question I have given in the handout itself. Why be moral? Morality, हाँ आ जाओ, आगे आ जाओ, मैं कह रहा हूँ. In fact if you guys can come forward it will be easy for my throat also. आ जाओ, जब इतना मेरे को भी थोड़ा अच्छा रहेगा. आ जाओ, आगे आ जाओ यार, क्या पीछे बैठना हमेशा. ओके. कि ethics, why be moral? If this question is asked from you, why be moral, what will be your answer? ये सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन है एथिक्स का. आई मीन वी आर टॉकिंग अबाउट मोरालिटी, वी शुड नो द ऑब्जेक्टिव ऑफ मोरालिटी ऑल्सो ना. सो व्हाई बी मॉरल? हाँ देखो, अब यू सेड कि अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न फिलोसफी, you have to be specific in your answers. Which Western philosopher has said this thing? You could have written Aristotle, you could have written Socrates, you have written, okay, even Plato has in his cardinal virtues has said the same thing. So try to be specific. Okay, so keep being moral will lead to true happiness. हाँ, एडिमोनिया जो उसने एरिस्टोटल ने कहा, या फिर एट्रैक्सिया शब्द इस्तेमाल किया था एपिक्यूरस ने.
Epicurus use ataraxia. Stoics, Stoics ने की Stoics, who's a Stoic, who maintain balance in life. Okay, ये सब terms हैं which you guys should know. Ataraxia. ये सर्च करना इंटरनेट पे. Who is called a Stoic? Stoicism स्कूल से आता है. स्थिति प्रज्ञा, the word which has been used in Bhagavad Gita. So all of these terms have the same meaning: ataraxia, stoic and स्थिति प्रज्ञा. And eudaimonia भी इसी का यही एक ऑलमोस्ट सेम टर्म है. एरिस्टोटल का था eudaimonia. एट्रैक्सिया भी है. हाँ, एट्रैक्सिव है. नहीं पता ये? सर्च करो, देखो सर्च करो. एवरीथिंग आई विल गिव यू द आइडिया. सर्च इट ऑन गूगल. सो वाई बी मॉरल. अच्छा, इंडियन फिलोसफी में मोरालिटी क्यों बोला गया है? व्हाट डू वी कॉल मोरालिटी इन इंडियन फिलोसफी? धर्मा. नीति शास्त्र कह सकते हैं और धर्म वी कैन कॉल इट. वाई वी शुड फॉलो द धर्मा? हाँ, एक दो चीजें आते हैं. टू थिंग्स आर देयर. यू विल गेट योर मोक्ष, एंड सेकेंडली हेवन का भी हम कह सकते हैं कि हेवन में जाओगे एंड यू विल गेट फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. ओके. और फिर वाई बी मॉरल में तो मैक्सिमम कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं ना, कि द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बीइंग इमोरल आर वेरी हार्श. फिर एट इंडिविजुअल लेवल, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, different levels we can talk about the consequences. हाँ, yes, certainly. To be praised by society, to remain in harmony with society. एक डायग्राम बना दो, सोसाइटी टू सिविलाइजेशन. व्हाट्स द डिफरेंस? सोसाइटी और सिविलाइजेशन में डिफरेंस एथिक्स ही लाता है. ओनली थ्रू एथिकल कंडक्ट द सोसाइटी विल कन्वर्ट इनटू सिविलाइजेशन. मोक्ष कह सकते हैं, निर्वाण है, केवल्या है. ऑल दीज वर्ड शुड बी क्लियर कट इन योर माइंड. केवल्या सुना है? किसने यूज किया? क्या मीनिंग होता है केवल्या? एनलाइटनमेंट तो सबका ही मतलब एनलाइटनमेंट है. स्टेट ऑफ ब्लिस तो वो निर्वाण क्या है फिर? मोक्ष क्या है? This is what happens na in exam. They are asking for clear cut. If this question comes, he would be expecting you a clear meaning. Kevalya words come from the word keval gyan, which means supreme knowledge, supreme wisdom. And what Jainism says is that every soul has this capacity to achieve supreme knowledge, but it is masked by karmic matter. सोल पे क्या आ जाता है? कार्मिक मैटर आ जाता है. So we are not able to know the ultimate truth. So we have to shed this karmic matter through what? पेनेंस करेंगे. तभी वही पेनेंस का लॉजिक क्या है? फास्टिंग, पेनेंस, इसका लॉजिक क्या है? टू शेड द कार्मिक मैटर विच हैज कवर्ड आवर सोल. तो वो मिट्टी हटा दो सारा, एंड द सोल विल बी एबल टू नो द ट्रू गॉड, द ट्रू विजडम. So concepts are very easy. If this conceptual clarity is there, you will be able to answer the questions. Okay. So basic debates हैं. फिर dimensions पे मैं बता रहा था, मेटा एथिक्स आ जाता है. फिर उसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, हाउ पीपल आर बिहेविंग. फिर आता है नॉर्मेटिव एथिक्स, हाउ पीपल शुड बिहेव. एंड देन कम्स अप्लाइड एथिक्स, that how moral knowledge is put into practice. And then within applied ethics, multiple branches are there. Sports ethics, military ethics, PSUs ethics, corporate ethics, social ethics, cyber ethics, all these are there. Then in private and public relationships, private ethics के कुछ example दो. Some examples of private ethics. Hmm?
वो तो अलग चीज हो गया। हाँ, मैंने बोला कि एथिक्स का, टेल मी, हाँ, केयर हो गया, केयर हो गया, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन। गांधी जी ने 4 प्रिंसिपल बोले हैं, 4 प्रिंसिपल्स ऑफ गांधी, इसको राव, RAAU, रिस्पेक्ट मतलब शॉर्ट में याद करने के लिए, रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन, अंडरस्टैंडिंग, RAAU, 4 principles which govern relationships. Okay. Private relationship is controlled by our morality, our own conscience, whereas public relations are controlled by what? Are public, again, be specific. You have this problem now. You are very generic. External locus of control is there, but what controls? Code of conducts of organizations, norms of society, constitution, ये सब क्या है? These are all related to public relationships. And they are not completely isolated. They affect each other. फिर human values आ जाता है. Basically, it is about the leaders and the values that they have taught. Lessons from the lives and teachings of great leaders and reformers, administrators. So there is no limit to this topic. But basic Gandhi ji, Ambedkar, Nehru, these basic ideas about these philosophers you should have. Like how Gandhi and Ambedkar, they will ask question how Gandhi and Ambedkar were different when it comes to Varna system. हाँ, अंबेडकर ने एनाइलेशन ऑफ कास्ट का बात किया कि वी वांट टू डिस्ट्रॉय दिस कास्ट सिस्टम, वी हैव टू डिस्ट्रॉय द वर्ना सिस्टम एज इटसेल्फ. बट व्हाट लॉजिक गांधी जी गेव? हाँ, basically these 4 varnas, they define the 4 universal occupations. Okay, and this untouchability, caste system, these are nothing but outgrowth of varna system. So if an outgrowth is there, so better to cut the outgrowth rather than the whole body. If pain is there in your one finger, then it doesn't mean that you will shut down the whole body. You will try to cure that one finger. So this was his idea. But Ambedkar said that this thing has entrenched so much in our society that now we have to completely destroy the Varna system as itself. It is the foundations of it. क्योंकि वर्ना में जहां भी inequalities आएगा, problems will happen. Wherever the hierarchy will come, problems will come. ये मैं बताऊंगा अभी डिटेल्स में आपको. फिर then this topic is also important role of family, society and educational institutions. Okay, what is how family affects, how society affects, how government affects education. तो ये सब मैं बताऊंगा आपको. जैसे अगर सपोज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे क्वेश्चन आता है, what you can write from your general knowledge. Can you give some example of a particular institution which inculcate particular values? हाँ, वो कर सकते हैं गुरुकुल से. और प्रेजेंट क्या है जो वोकेशनल ट्रेनिंग बेस्ड है, कि they are just teaching the skills, but they are not teaching the use of those skills, the values which are required. Like I teach you how to use the knife, so the same skill can be used to kill someone also and to cut vegetables also. So what will make the difference? The character, the values will make the difference. तो वैल्यू इनकलकेशन नहीं है. जैसे JNU का एग्जाम्पल आप दे सकते हो. JNU हैज दिस बेसिक कम्युनिस्ट फिलोसफी. They are not against government. They are against nationalism. They are against religious doctrines. Okay. So, एक basic idea आपका बनता है. So this is our topic. इसके अलावा contribution of moral thinkers and philosophers हैं, and case studies हैं, that also I will discuss. But first, I will give you the basic criteria. देखो एक अच्छा आंसर क्या होता है, this thing you should know. Okay, basic ideas. Like many times you guys must be joining some test series also.
And you guys would be getting some comments also ki presentation is not there, organization is not there, clarity is not there. So you should have a basic meaning about all these terms. So first of all, before starting discussing the questions, I will tell you the criteria for a good answer. Okay. Now see, the first thing is clarity. And see, this criteria I have developed after checking thousands of copies in the last 7 8 years. Okay. So I've come up with these 10 basic qualities which if are there in answers, you will secure good marks. Like clarity is one of the most important of them. What do you mean by clarity? Aata hai na? When you write the answer, this comment is given to you. No clarity. But what do we mean by that? Clarity, see, is basically the harmony between what the question is asking, what you are understanding, what you are writing, and what the evaluator is understanding. And most of the times, all these things are completely different. Question is asking something else. Like the first question is asking relation between religion and morality. And you are writing what religion is, what morality is. Half of the page you wasted writing these things only. Okay. So what the question is demanding, what you are understanding, and you have the ideas, but sometimes you're not able to express them properly. So you are writing something different. You had some different idea. And when the and you are also not writing it properly. So the evaluator is understanding something else. तो कहते हैं ना Chinese whisper, सुना होगा आप लोगों ने कि I say something to you, you said something else. तो ये क्या है कि the I mean, at the end, when the evaluator is reading your answer, he has a completely different understanding of what you wanted to convey to him. So that thing should not be there. Clear cut, simple ideas must be written. Okay. What I have seen is, this is my research, that on an average, if a copy, there is no clarity in it, I take more than 1 hour to check it. But copies with clarity, only 40 minutes are taken. And it is something which is, which is clearly conveyed to the evaluator also, that whether clarity is there or not. How you can bring clarity, it is the essence of good writing. Are you getting my point? कैसे clarity लाते हो आप आंसर में? बताओ. सिंपल राइटिंग करोगे, जीएस टाइप राइटिंग करना है आपको. आई ऑलवेज गिव दिस एग्जांपल ऑफ 3 इडियट्स मूवी. उसमें वो मशीन का डेफिनेशन पूछा था ना, तो डेट चतुरांगलिंगम कि वो वही हार्ड कोर ऑप्शनल सब्जेक्ट वाला टाइप. एंड देन दिस रैंचो वन कि machine is something which makes our work easy, which saves times for us. So this kind of approach is required, because we also don't know who checks ethics copy. Ethics is not a specialized field, right? So who checks ethics copy, ये भी नहीं मालूम हमको. So you have to be very simple in your approach. Proper organization of points should be there. Subheadings must be given. If the question has 2 parts, then you should give subheadings between them. How you are presenting your answer. See, देखो एक छोटा सा चीज बताता हूँ आपको, बहुत सिंपल छोटी सी चीज है. Let's say this is your answer sheet. You are writing 2 3 pointers. Which one brings more clarity? First one. And most students do this. They do not maintain this line. Then the gap between paragraphs. These are 2 lines of same paragraph. So gap between them should be different. And these 2 lines are of different paragraphs. So this gap should always be higher. What the students will do?
the whole page looks same. So very simple techniques. Even if your handwriting is bad, then also by doing these specific things, you can increase the aesthetics of your copy. और देखो, the things which looks good gets good marks. ये basic है जो कहते हैं beauty is only skin deep, they are lying. Beauty do matter, aesthetics do matter. If your copy is neat and clean, certainly you're going to get the marks. Okay, and I'm not talking about handwriting. It is about these basic techniques. बीच में subheading डाल दो अच्छा सा. You are suppose you are making a diagram. Let's say stakeholders. So stakeholders, you have written, put it in a box. Clear boundaries should be there. Okay, so these very simple techniques, if you will apply, the presentation thing will increase. Try to write simple answers. Try to keep your point in a very organized manner. How these things will happen, I will discuss along the questions itself. So clarity. Second thing is relevance. Second point is relevance का मतलब क्या होता है? हाँ, now most of the students what they write, not what they know, but I mean what they know rather than what the question is asking. वो इसमें we give that example also ना, कि a student prepared an essay on cow. Next day in the morning when he went for the exam, the question was asked on a tree. So he wrote 3 lines on tree and then he tied the cow around the T. And then he started writing about the cow. So this is what you guys also do. What you do, no matter what the question is, okay, you will somehow link it to what you know. And then you start writing what you know. And it happens, it's a human tendency. Like every time, like a few days back, I was giving a speech in my daughter's school. Okay. So they asked a different question, but I linked it with ethics. And then I start lecturing on ethics only. Because this is what I know, this is my domain is. Okay. So this happens, this is a natural tendency. But avoid this in UPSC. Relevance hona chahiye. And see, some students have this tendency of writing more and more points. This comment would have been given to you, all of you, na? Ki write more perspective, write more points. This approach is not going to work in ethics paper. More points you write, less number you are getting. This is what is happening, especially in ethics paper. What UPSC is expecting from you is that you give a brief explanation. Are you getting my point? Suppose you know 7 points about something. What you do, at least for the first 2, 3, give a 3 or 4 line explanation. Then maybe the last 4 points you can write in pointers. But in paragraph format, write few ideas. Abhi in the morning I was checking a copy of an IPS officer. He's again attempting, I think his 5th attempt, 4th interview. And he's not getting marks because the same mistake he's making again and again. His copy is full of knowledge, full of points. But again, what is happening? Flow is not there. Abruptly points are coming out. Are you getting? He's not explaining, he's just mentioning. जैसे अनेकांतवाद, that's it. जैसे the question was on diversity of views. So for example, Jainism and अनेकांतवाद. This thing is not going to help. You have to write at least 1 or 2 lines about अनेकांतवाद. And don't worry, if you are writing lesser number of points, you will get more marks. ये थोड़ा सा काउंटर पॉइंट है. I mean, you guys will think कि सर क्या बोल रहे हैं. But again, for the last 6-7 years, I am observing this trend. I check copies by myself. हाँ, वो आपके उसमें maybe this thing happen because it is more fact oriented, knowledge oriented. Those papers are achievement test. This paper is an aptitude test. Understand this thing.
अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है? इट चेक्स द अचीवमेंट्स दैट यू हैव मेड इन द पास्ट, द नॉलेज दैट यू हैव गैदर्ड इन द पास्ट, बट दिस पेपर इज अबाउट व्हाट यू कैन डू इन फ्यूचर. सो नॉलेज में पुल अप कर दो कि कुछ नहीं होने वाला. नॉलेज इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट इन दिस पेपर. एनालिसिस, critical thinking, decision making, these things will help you. So relevance होना चाहिए. फिर तीसरा पॉइंट है वैल्यू डायमेंशन. वैल्यू डायमेंशन, now see what happen, huh? In most of the answers, these, the ethics का पेपर है, so you have to write these basic terminologies ना, justice, rights के अलग अलग rights. जैसे लोग लिख देंगे that human rights are violated, but no, this is a very generic approach. You have to specifically mention which human right is there, it is violated. The more specific you become, the more marks you will get. फिर वर्चूज क्या है? डिफरेंट वर्चूज, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, ये वर्ड्स को डालो. इट शुड लुक लाइक एन आंसर ऑफ एथिक्स. जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे. ओके, व्हाट आर दी एथिकल इश्यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? व्हाट यू विल राइट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या कंसर्न्स है? मोस्ट पीपल विल राइट जॉब चला जाएगा. अब देखो वो लिखेंगे जॉब्स विल बी गॉन. तो ये हो गया जीएस पेपर 3. और जीएस पेपर 4 में क्या लिखोगे? राइट टू लाइवलीहुड विल बी इन डेंजर. नहीं आई समझ में बात? दिस इज हाउ यू हैव टू बी डिफरेंट. देयर द जॉब्स विल बी गॉन, हेयर राइट टू लाइफ विल बी गॉन. देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशंस होगा, यहाँ पे क्या लिखोगे? प्लेजरिज्म लिख सकते हो आप. ठीक है. और हाँ, इंटेलेक्चुअल आईपीआर यहाँ पर भी आ सकते हैं. दीज आर ऑल्सो राइट्स ओनली. सो थिंग्स आर डिफरेंट. वैल्यू डायमेंशंस मस्ट बी देयर. Then the fourth point is other dimensions which are covered. How many dimensions you are covering in your answer? Like this paper has 3 dimensions. बताया था ना अभी, psychology, administration and philosophy. Like suppose there's a question on greed. From philosophy, what you can write in this? किसी ने बोला ग्रीड के बारे में? एनीवन? गांधी जी ने क्या बोला? इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड, इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड. फिर 6 एनिमीज ऑफ माइंड, भागवत गीता ने बोला दैट ग्रीड इज द एनिमी ऑफ माइंड. जैनिज्म ने क्या बोला? अपार गृहा. ठीक है. और बुद्धिज्म ने भी इसको वन ऑफ द पॉइजन्स ऑफ, वन ऑफ द थिंग्स विच लीड्स टू डिजायर. नीड वर्सेस वांट. ठीक है, हाँ कह सकते हैं. तो बन गए ना 4 पॉइंट फिलोसफी से. देन फ्रॉम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट व्हाट यू कैन राइट इन ग्रीड? ग्रीड क्या है बेसिकली? अरे इमोशनल इंटेलिजेंस. इट शोज लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. पीपल आर ओवरवेल्म्ड बाय देयर इमोशंस. एटीट्यूड में क्या लिखेंगे? कि इमोटिव फैक्टर dominates the cognitive and behavioral factor. बन गया. 2 पॉइंट्स यहां से बन गए. फिर एडमिनिस्ट्रेशन, करप्शन, फेवरेटिज्म, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ ग्रीड इटसेल्फ. ग्रीड का क्या, और सोसाइटी में ग्रीड का क्या एग्जाम्पल दोगे? मटेरियलिज्म, हेडोनिज्म, इट्स ऑल जनरल. जैसे डाउरी कैन बी एन एग्जाम्पल. थोड़ा सा और स्पेसिफिक कोई रीसेंट इवेंट्स का कोई भी दे दो. कोई भी एनी पर्सन हु हैज बीन रिसेंटली कॉट टेकिंग ब्राइब. ठीक है. मतलब नाम मत लिखना. इफ एलिज्ड है, ओनली व्हेन द थिंग शी हैज बीन पनिश्ड देन ओनली. पूजा सिंगल का नाम लोग लिख देते हैं बट डोंट राइट हर नेम. हाँ हाँ हाँ, यस. बस ये हाँ. अभी जस्ट 2 days बैक a girl was there, I think Jharkhand, and on the first day of her job she was caught taking 20,000 rupees.
थोड़ा एक्सपीरियंस ले लेती फिर कर लेती, बट नहीं, वो फर्स्ट डे ही हो गया। सो डायमेंशंस कवर्ड, इस तरीके से लिखो, कुछ एक्साइटेड लिखो। ऐसे ही सब पे आ जाता है, ग्रीड पर, एंगर पर, एनीथिंग यू कैन राइट। फिर आता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। द फिफ्थ पर्सपेक्टिव इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। हाँ, जैसे नीरव मोदी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ बिल्कुल ऑनलाइन वाले भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का मतलब, दिस पेपर इज आस्क एवरी ईयर 2-3 क्वेश्चंस आर ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। व्हाट इज गुड गवर्नेंस, व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाट इज हैप्पीनेस, इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। लाइक व्हाट इज हैप्पीनेस, सिंपल क्वेश्चन है, बताइए। इफ यू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉरल फिलोसफी, व्हाट इज हैप्पीनेस? कंटेंटमेंट। जैसे सोक्रेटिस ने क्या बोला, व्हाट इज हैप्पीनेस? सेटिस्फैक्शन ऑफ सोल, वो एपिक्यूरस वगैरह ने बोला, उसने बोला लिविंग अ वर्चुअस लाइफ इज हैप्पीनेस। लिविंग, सिंपल तो है, क्या है इसमें? लिविंग अ वर्चुअस लाइफ इज हैप्पीनेस। इंडियन फिलोसफी, लिविंग following the life with dharma will lead to eternal happiness. Finding moksha is eternal happiness. और साइकोलॉजी क्या बोलती है? What is the biggest source of happiness in human life? बताओ, what makes you happy? Career, IAS. At least you could have said this thing ना, if I will become an IAS officer, I will be happy. बट देखो, इन साइकोलॉजी जो एविडेंस भी कहता है वो ये कहता है that the biggest source of happiness is good relationship. No matter what you become, if there are not people around you who were there in your journey, it really doesn't matter if the people are not around there to see you, like your parents are there, maybe your siblings. So if these people are not there who really wanted to see you on that post, then that post will be of no meaning. Okay, so अब देखो ना, IAS officers, they commit suicide. IAS officers, I'm telling you, they're living miserable lives. Many IAS IPS officers, डाइवोर्स हो जाता है बहुत जल्दी क्योंकि फैमिली में बैलेंस नहीं हो पाता. सो बिकॉज गुड रिलेशंस आर नॉट देयर, सो दे आर नॉट हैप्पी. सो ऐसे बनाना है आपको, कॉन्सेप्ट शैल बी क्लियर. फिर है बैलेंस इन आंसरिंग ऑल एस्पेक्ट. सिक्स्थ पॉइंट इज बैलेंस इन आंसरिंग ऑल एस्पेक्ट. हाँ, yes, Sandeep. In most of the answers, you can take these approaches. अब क्या होता है, if the question has two parts ना, most of the students what they do, the first part 80% they will give, and the second part only 20%. But that is not the right thing to be done. At least 60-40 ratio should be there. Okay, so balance करना है. Then examples again are very important, especially for this paper. Now, how students give examples? Like suppose some bureaucracy, something like this is there. So Ashok Khemka, Vinod Rai. I mean, same type of 3-4 examples they will give. That is not going to help you. One example is more than enough, and one example from maybe different perspective. Like Vidur, you can give example of Vidur from Mahabharata. Vidur Niti is also known, he is known for. Okay, महाभारत से लाओ, रामायण से लाओ, कुरान से एग्जाम्पल्स उठाकर लेकर आओ, कितने सारे. ओके, गुरु ग्रंथ साहिब से, गुरुज की लाइफ से कुछ उठा लो. सो मेनी थिंग्स यू नो. अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है दैट ऑल, आई मीन ऑल दीज थिंग्स, इफ दे आर प्रोपगेटिंग अ यूनिवर्सल ट्रूथ, देन देर इज नथिंग रॉन्ग कि उनको लिखा जाए आंसर्स के अंदर या स्कूल्स के अंदर उनको पढ़ाया जाए. दिस केस वॉज गोइंग ऑन ना, केंद्रीय विद्यालय, that Sanskrit shlokas are taught in the school. The Supreme Court has said that if these shlokas, if they give a message of universal truth, then there is nothing wrong in it. Okay. So examples, then current affairs linkages. Most people forget to make current affairs linkages. Okay. Then current affairs से हर चीज को जोड़ा जा सकता है. ग्रीड के, एज आई सेड,
some examples you can give, any question जैसे अभी discuss करेंगे, I'll tell you. फिर novelty, novel ideas, if you are able to write, that thing will really help you a lot. Ability to write your innovative original ideas which comes from original reading, वो ज़रूरी है. And the 10th point is handwriting and use of language. हाँ, द्रोणाचार्य also, yes. Handwriting, देखो handwriting, use of language is of least concern. But if the other things are not there, these things will add to frustration. Okay. So at least basic legible handwriting should be there. And if you will apply these methods, then the aesthetics of your copies will increase automatically. Okay. Chali. So based on these things, now we will try to do some questions. Let's get to the first question of handout. हाँ, हाँ, templates I will give you. See, like case studies are there. Again, when I'll reach case studies, na, I will give you that thing also. Okay. Hmm. Because it has not, it is because see, this is the problem. This is an approach of GS papers. But in ethics paper, you cannot attribute a question to a particular topic. नहीं है ये बात समझ में? This is a problem actually. You don't have to do this thing. Maybe to a particular unit or to different topics to which a question, जैसे greed है. अब greed किसके साथ associated है? इमोशनल इंटेलिजेंस भी है, फिलॉसफी भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है. सो ट्राई टू कनेक्ट विद मल्टीपल टॉपिक्स. अभी करेंगे उसको हम लोग और आगे भी करेंगे. एंड सी रिगार्डिंग द लेंदी पेपर, द ओनली थिंग इज प्रैक्टिस. द मोर प्रैक्टिस यू विल डू, the more proficient you will become. The more ideas are there in your mind, automatically the pen will start moving fast. Plus some techniques are also there, that also I will teach you. Especially the case studies part. Na, case studies are lengthier. Section A is almost the same. Question 2 लाइन की जगह 4 लाइन का हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा. चलो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. What in your opinion is the relation between religion and morality? Is it necessary to be religious for being moral, and is it important to be moral for being religious? Elucidate with the help of examples. बताइए. हाँ, basically is now what most of the people do here is कि first of all they will define ethics, then they will define religion. This thing is not required. You have to directly start with the relation between them, because question already has 3 parts in it. Okay, if 2 to 3 points you will write in each part, then also 150 words will be written. So you have no space, no words to waste. So directly go to the time. Yes, what is the relation? Positive relation and negative है. Positive है. Okay, in fact you can say that religion and ethics are inseparably bounded by each other. Inseparable है दोनों. जैसे कुछ metaphors draw करो. Like religion is to ethics is what water is to the seed sown in the soil. नहीं है बात आई समझ में? Religion is to ethics is what water is to the seed sown in the soil. Water क्या करता है? Nourish करता है seed को. So the same way religion also nourishes the ethics. In fact, see, one more thing I would like to tell you.
The question is asked, what in your opinion is the relation between religion and morality? Now, most of the people, they start giving philosophies that as per Mahabharata, as per this, as per that. No, your opinion has been asked. First of all, you will give your opinion, and then to support it, maybe you can write one or two philosophies. So, whenever opinions are asked, give a personal touch to the answer. Most students forget to do this. तो आप यहाँ पे लिखोगे, ये सिंपल पॉइंट हो गया, फिर लिखो स्ट्रॉन्ग कि आई बिलीव that any religion which is against rationality, which is against ethics, must be completely rejected. Strong lines लिखो थोड़ा सा. आ रही बात समझ में कि अगर कोई religious doctrine है and it is against rationality, against ethics, then it should be rejected. उनको कोट किए बिना उनका आइडिया खुद बना के डालो. नहीं आई बात समझ में? वाई यू हैव टू कोट एवरीथिंग? यू कैन यूज द कोट एज अ सेंटेंस ऑल्सो. यू कैन यूज देयर आइडियाज एज योर ओन आइडिया. उनका आइडिया अपना आइडिया बना के लिख लो कि योर ओपिनियन हैज बीन आस्क्ड. नहीं आई बात समझ में? देखो जैसे एक उसमें एक कोट है, जैसे एनी रिलीजन which teaches you how to treat your slaves or which stops a person from reading, that religion should be, that religion is outdated, it is obsolete, it needs updations. तो यहाँ पे हिंदू और इस्लाम दोनों की बात हमने कर दी कि अगर कुरान कहता है कि भाई स्लेव्स को कैसे ट्रीट कर, तो स्लेवरी पहले ज़माने में चलती थी. नाउ दिस थिंग डजंट वर्क, सो अपडेशंस आर रिक्वायर्ड. सिमिलरली इन हिंदुइज्म कि भाई शूद्रों को पढ़ने नहीं देंगे, वी विल नॉट अलाउ शूद्रास टू स्टडी. सो दिस रिलीजन, इट मीन्स इट इज आउटडेटेड एंड इट नीड्स अपग्रेडेशन. पॉलीगैमी पहले चलता था, अर्लियर इट वाज देयर, बट नाउ पॉलीगैमी इज नॉट पॉसिबल. व्हाई? बिकॉज द सेक्स रेशियो इज ऑलरेडी स्क्यूड अगेंस्ट वुमेन. पहले क्या पॉलीगैमी का लॉजिक क्या था पहले? हाँ, देवदासी सिस्टम ऑल्सो, यस यू कैन से. what is the basic logic behind polygamy? Why more number of women were there earlier? People used to die in war. बहुत ज़्यादा life expectancy because men used to go outside. Okay, so especially for those women, those who have got widowed. Okay, so these women were taken by a particular person so that their basic requirements can be met and a basic safety is given to them. जैसे इवन लॉर्ड कृष्णा है 16,000, कहते हैं ना उनकी 16,000 पत्नियां थी, तो 16,000 कहाँ से आई थी? बेस हाँ, नहीं 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 भाई, कोई किंगडम नहीं था. ही किल्ड अ डीमन. So that demon had kidnapped the 16,000 princesses from different kingdoms. So now after the death of the demon, so these princes said, now nobody will take us because we have been kidnapped by this guy. So Krishna said that okay, I will take you under my command. ठीक है, मैं अपने अंडर आपको रखूंगा and you will get my safety, my protection. तो यही प्रॉफिट मोहम्मद में भी आई थिंक ये हुआ था, वहां पे भी हुआ था ये. सो बेसिक लॉजिक ये था तब. नाउ these things are not available in the society, these things have gone, so the polygamy should also go then. और अब polygamy नाम का ही एक दो ही लोग करते हैं और वैसे ही नहीं बचा. हरियाणा पंजाब में तो ऑलरेडी ब्राइड स्मगलिंग हो रहा है. दे आर स्मगलिंग ब्राइड्स फ्रॉम नेपाल एंड बंगाल. पॉलीएंड्री चल रहा है वहाँ पे. यू नो दिस थिंग. Some cases of polyandry have been seen where the two brothers are marrying the same woman. है ही नहीं because there are no girls. So अच्छा, अब ये बताओ मुझे, is it, ये तो हो गया पहला पार्ट आपका. Okay. Second is it necessary to be religious for being moral? No. Why? Because there are atheists also. There are जैसे किसी एथिस्ट का नाम लो जो मॉरल था, भगत सिंह. नेहरू का नाम भी दे सकते हैं. नेहरू वॉज एग्नोस्टिक. एग्नोस्टिक आप समझते हैं ना क्या होता है? थीस्ट, एथिस्ट एंड एग्नोस्टिक.
Theist says God is there, atheist says God is not there, and agnostic says I don't know. I mean, this thing cannot be confirmed that whether God is there or not. Sorry? हाँ, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, मोरालिटी इज एन एंड इन इटसेल्फ, लिख सकते हैं. अच्छा, जैसे मैं इसमें एग्जांपल देता हूँ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का. हु आर द टॉप मोस्ट नेशंस इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स? हाँ हाँ, बताओ. Scandinavian countries, Sweden, Norway, Finland, and these countries are not very religious. अभी मैक्सिमम लोग यहाँ पे एथिज्म की तरफ जा रहे हैं. So they are not religious and yet they are the most ethical ones. India highly religious and yet its position is very low in corruption perception index. We even bribe our gods. Okay, God bribery वहां से आ रहा है, पर्सनल रिलेशन से आ रहा है कि God I'll give you 200 rupees or I'll give you my hair, so pass me. I mean, it doesn't, everything depends on karma, right? तो ब्राइबरी हमारे रिलीजन का पार्ट है. एंड सी मेनी पीपल आर यूजिंग रिलीजन टू जस्टिफाई देयर अनएथिकल एक्ट. ये भी लिखेंगे आप. टेररिज्म लिख लो आप, चाहे वो इस्लामिक जिहादी हो गया या फिर हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हो गया, दोनों का एग्जाम्पल आप डालेंगे उसके अंदर कि बोथ आर यूजिंग रिलीजन टू justify their unethical act. तो हम कह सकते हैं that religion is one of the sources of ethics but not the only source. फिर second part है, is it necessary to be ethical for being religious? हाँ, yes. क्यों? क्योंकि the essence of every religion is ethics. और इसमें गांधी जी का क्लियर कोट है that the moment you become immoral you cease to be religious also. ये लिख लो चाहे तो कि as soon as we lose our moral basis, as soon as we lose our moral basis, comma, we cease to be religious. And every religion has certain value. जैसे इस्लाम का सेंट्रल वैल्यू क्या है? पीस की बात करता है, पीस. It talks about peace, that a good Muslim is a one who remains in peace with others. पीस का बहुत सेंट्रल मैसेज दिया गया है इस्लाम के अंदर. हिंदुइज्म का सेंट्रल आइडिया क्या है? टॉलरेंस, सर्वधर्म संभव. टॉलरेंस की बात करता है, that all ideas are okay. जैनिज्म बात करता है नॉन वायलेंस की. क्रिश्चियनिटी लव की बात करता है कि गॉड इज लव. लव के आइडिया से काफी मोटिवेटेड है. तो ये थीस्ट, एथिस्ट, ये सब आपको आइडिया कॉन्सेप्ट्स हैं. ये नेहरू जी एग्नोस्टिक थे, सो ही स्टेड अवे फ्रॉम रिलीजन. भगत सिंह एथिस्ट थे. गांधी जी क्या थे? हाँ, थीस्ट थे. ही वॉज अ थीस्ट एंड ही सेड दैट आई बिलीव इन हिंदुइज्म बिकॉज ऑफ इट्स टॉलरेंट नेचर. तो एग्जाम्पल्स ऐसे देने हैं आपको. अगर थीस्ट एथिज्म का क्वेश्चन आता है तो इन तीनों के बारे में लिख दो, भगत सिंह, गांधी और नेहरू. हो गया काम आपका. एक आईएएस ऑफिसर को रिलीजियस होना चाहिए? हाँ, इन पर्सनल स्फेयर ही कैन बी, बट इन पब्लिक स्फेयर ही मस्ट बी सेक्युलर. ठीक है. क्रिश्चियनिटी में फॉरगिवनेस, लव का आई थिंक सेंट्रल आइडिया है, बट अगेन दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव थॉट.
So for others it can be forgiveness also, Sandeep. कोई इसमें फर्क नहीं आता खास. चलिए now let's move to the next question. ये अब आपको समझ आ गया. एक डायग्राम और मैं बना देता हूँ. Religion or ethics, they are overlapping. अब देखिए वेस्टर्न फिलॉसफी इतनी, इसका एक देखो यहाँ से एक और लॉजिक आता है. वाई वेस्टर्न फिलॉसफी सो पॉपुलर, इंडियन फिलॉसफी इज नॉट. हाँ, इंडियन फिलॉसफी इज हाईली लिंक्ड विद इट्स रिलीजन, whereas वेस्टर्न फिलॉसफी सेक्युलर इन नेचर. इनफैक्ट जो डार्क एजेस थे, जो मेडिवल एरा था, तो उसमें वाई दे आर कॉल्ड डार्क एजेस, बिकॉज द चर्च वॉज डोमिनेटिंग द एथिकल स्फेयर ऑफ पीपल. जैसे कहते हैं कि इन द वेस्ट देयर देयर रिलीजन कम्स फ्रॉम जेरूसलेम एंड देयर फिलॉसफी कम्स फ्रॉम ग्रीस. आप समझ रहे हैं? जबकि इंडिया में दे आर हाईली इंटरमिक्स. फिलॉसफी, culture, and ethics and religion, sorry, they are all highly intermixed and they cannot be separated. See, religion not only includes ethics but other things also, like different, one god is also there, certain rituals are there. That is why they are not completely overlapping. What is the significance of Nishkam Karma in civil services in India? Give examples of true personalities who have followed this approach. निष्काम कर्मा कहाँ से आता है? भागवत गीता. What do you mean by निष्काम कर्मा? हाँ, कर्मण्य अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. Basically, you have to do your duty without any expectation of reward. You should have a disinterested interest in your work. Disinterested interest in your work. You will not see, like Bhagavad Gita doesn't say that you should stop feeling good, you should stop feeling happy, but you should not attach yourself to the thing. Okay, like suppose you have a cycle today, you are happy in that. You will have a Mercedes tomorrow, you will happy in that also. But suppose if that Mercedes is taken, then you should not feel sad. You should not attach yourself. If it is there with you, you will enjoy it. If it is not there, then also it really doesn't matter. अच्छा, ड्यूटीज क्या है? भागवत गीता कह रहा है ये निष्काम कर्मा, that you have to perform your duties without any expectation of reward. But what are your duties? एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको. क्या है ड्यूटी आपका? ऐसे तो आईसीएस में आप काम कर रहे हो, आईसीएस ने आपको कर दिया कि इट इज योर ड्यूटी टू किल अदर्स, सो यू विल स्टार्ट किलिंग देम. हाँ, बेसिकली इन भागवत गीता दे हैव गिवन two ideas basically: the duties as per your varna and the duties as per your ashrams. As per your varna and as per your ashram. और ऐसा भी कहते हैं एज पर योर पुरुषार्था ऑल्सो. तो बेसिकली ये 3 का मैट्रिक्स बनता है. 4 पुरुषार्थास आर देयर, 4 वर्णास एंड 4 आश्रम. अलग अलग ड्यूटीज हैं आपकी. लाइक द 4 ब्रह्मचर्य आश्रम में व्हाट इज योर ड्यूटी? एजुकेशन एंड पे योर गुरुज debt. Basically the 4 debts are given. Okay, the guru's death, the pitru's debt you pay in grihastha ashram by fulfilling the family's duties and reproduction भी उसमें आता है. Third is manushya rina, your debt towards humanity, so that is in vanaprasth. And in sannyas, God's debt, so your duty towards devtas that you have to pay. ओके, तो ये 4 बोले गए हैं. और वर्ण में क्या क्या ड्यूटीज हैं आपकी?
क्षत्रिय विल प्रोटेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वो पता है आपको, वैश्य ट्रेडिंग और एग्रीकल्चर आ गया, पंडित आपका ये आपका नॉलेज टीचिंग प्रीस्ट ये सब आ गया, एंड शूद्रस सर्विस। ओके, गोल्ड स्मिथ टीचिंग ये सब, टीचिंग अभी जो कोचिंग प्रोफेशन है ये भी शूद्रा में आता है। ओके, क्योंकि सर्विस ओरिएंटेशन है, आई एम टेकिंग फीस फ्रॉम यू, द गुरुज नेवर टेक फीस। ओके, जैसे कहते हैं इसको कि अ शूद्र इज अ वन हु हु टेक सैलरी, ठीक है। अ वैश्य इज अ वन हु टेक प्रॉफिट, अ क्षत्रिय इज अ वन हु टेक टैक्सेस, एंड अ ब्राह्मण इज अ वन हु टेक्स आर्म्स। तो आ रही है बात समझ में, दिस इज आर्म्स, आर्म्स, दान, दान लेना। तो अगर आप मुझे दान करते देन आई कुड हैव बीन अ ब्राह्मण। ओके, but I am taking fees, I am taking a fees from you, so it puts me in the category of shudra. And these are just four tags. There's nothing to be ashamed of being a shudra, or being proud to be a brahman. These are just four universal occupations. Okay, so if a question is there on nishkam karma, you will write about this idea also, that what is our duty, and without any expectation of reward. Okay, who else has talked about nishkam karma approach? Kant. कैंट को कनेक्ट करेंगे, that you have to perform your duty. That is why I have given the next question, what do you understand by term duty, उस पर भी आऊंगा. But is it always a right approach doing निष्काम कर्मा? Can you criticize it? सही है हमेशा निष्काम कर्मा? वो तो ठीक है, but if you follow निष्काम कर्मा, do you always end up on the right side? Examples. हाँ, देखो इसमें एग्जाम्पल है कर्ण का. Karna did his nishkam karma, but he ended up on the wrong side. Bhishma Pitama did the same. Kumbhakarna did the same. They all did their nishkam karma. They gave their life while performing their duties, but they all end up on the wrong side. Like you can give examples of German commanders who obeyed Hitler and killed millions of Jews. They also did their nishkam karma. उसमें एग्जाम्पल दे दो उसका, वो क्या नाम था? एकमैन, हाँ, एडोल्फ एकमैन. एक और भी था, रूडोल्फ हॉस, उसका भी एग्जाम्पल दे सकते हैं. हाँ, हाँ, गलत काम अगर कर रहे हो तो सर्टली यस. तो निष्काम कर्मा कैन कैन मेक यू एंड अप ऑन द रॉन्ग साइड. बट निष्काम कर्मा का ऑपोजिट क्या है? कंप्लीटली टेलियोलॉजिकल अप्रोच. जैसे यूटिलिटेरियनिज्म बात करता है, रियलिज्म. जैसे दुर्योधन, दुर्योधन क्या था? टेलियोलॉजिकल अप्रोच का था. हिटलर टेलियोलॉजिकल अप्रोच. रामलिंगा राजू और सत्यम स्कैंडल, ये सब टेलियोलॉजिकल अप्रोच के थे. तो एक्सट्रीम टेलियोलॉजिकल इज ऑल्सो बैड, एक्सट्रीम निष्काम कर्मा इज ऑल्सो बैड. वॉट वी नीड इज द मिडल पाथ, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच. और इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म. ये लिख लो एक टर्म, रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म. इसका क्या मतलब होता है? डेट आई विल बी गुड टू दिस वर्ल्ड, बट आई विल नॉट अलाउ इट टू एक्सप्लॉइट मी. ये लिख लो लाइन चाहे तो. आई विल बी गुड टू दिस वर्ल्ड, but I will not allow it to exploit me.
वो गांधी जी का नहीं है भाई, तुमने सब मिक्स कर दिया। ग्रीक ट्रेडिशन से कोट आता है, लेट द इवल कम इन दिस वर्ल्ड, लेट इट इवन डोमिनेट दिस वर्ल्ड बट नॉट थ्रू मी, आई विल नॉट अलाउ इट। कोट को कोट की तरह मत लिखो, राइट इट एज अ सेंटेंस, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। एग्जाम्पल हो गया कि वी विल बी अल्ट्रुइस्टिक इफ somebody slaps us, yet we will talk good with him, but second time also he is doing bad, then we will reciprocate in the same manner. Okay, एक बार अच्छा करेंगे, one time we will do good, two times we will do good, but not the third time. कि जैसे वही गांधी जी ना, if somebody slaps you, put your other, तो दूसरा आगे कर देंगे गाल, but not the third time. दो बार हो गया बस, तीसरी बार you will hit him back. गांधी जी का क्रिटिसिज्म है, लाइक व्हाट इफ गांधी जी वुड हैव born in Hitler's Germany, and to in front of Hitler he would have said that I will go for fasting, तो किडनैप हो जाते रात को। ये जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी द एप्लीकेशन ऑफ गांधीज्म इन regimes where opponents are kidnapped or vanished in the night. ओके, जॉर्ज वेल, क्या था जॉर्ज वेल, जॉर्ज ऑरवेल, so he said this thing that it would be interesting to see the application of Gandhism in the regimes in which opponents are kidnapped or made vanished in the night. हाँ, जैसे यस यूपीएससी 2019 नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, जैसे इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, फर्स्ट वी विल नॉट यूज, बट इफ यू विल यूज देन वी आर ओपन। जैसे निष्काम कर्मा के करंट से एग्जाम्पल दीजिए। सुजीत चैटर्जी क्या किया था? हाँ, एजुकेशन का, अच्छा मैंने शेयर भी किया था अभी, हाँ सुजीत, मैं खुद ही भूल गया, सुजीत चैटर्जी, यस, आर्मी जवान, आर्मी जवान्स who are serving in Siachen, or let's say these medical professionals during COVID. और कोई निष्काम कर्मा का एग्जाम्पल फिर दो पर्सनालिटीज में अजीत डोवल का दे दो एक, ही इज डूइंग निष्काम कर्मा, अजीत डोवल नहीं, हाँ काम तो कर ही रहा है ना, ही इज डूइंग हिज वर्क। अच्छा अच्छा, हाँ वो सोमवंशी जी, मध्य प्रदेश, हाँ, he donated his office AC to a child's hospital. बट वो आई थिंक एम्पैथी का केस, एम्पैथी का एग्जाम्पल ज्यादा हो गया, उनका प्रॉपर ड्यूटी नहीं था ना, एम्पैथी का केस हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल, बताओ, वही तो बताने हैं। अरे यार, वो आर्मस्ट्रॉन्ग पामे का एग्जाम्पल ले लो, डीएम वाला है, अजीत डोवल का एग्जाम्पल ले लो, विनोद राय, टीएन सेशन, कोई भी दो तीन एग्जाम्पल्स लिख दो, और थोड़ा सा लिखो, लेकिन एक्सप्लेन करो डेट हाउ एग्जैक्टली दे हैव डन दिस थिंग। सोनू सूद, उसने, मॉरल ड्यूटी था ना उसका, कंपैशन से मूव करके उस पर उसने निष्काम तरीके से किया, उसको लगा मेरा काम है, मतलब एसी, मतलब देखो, एथिक्स में नथिंग इज एब्सोल्युटली रॉन्ग और राइट, बट कितना राइट है? ओके, सॉरी, हाँ हाँ, यू कैन, बट यू हैव टू गिव अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दैट व्हाट दीज गाइज हैव डन। जैसे खाली एज यू सेड ना, सोमवंशी,
But you have to write also that he donated his AC. Give a brief explanation of what they have done. Even if you're writing Ajit Doval, give a brief explanation. Kiran Bedi, she towed away the PM convoy's car. She reformed prison system in India. Okay. Now next, let's move to the next question. Question number 3. What do you understand by the term duty? What are the different sources of duty for an individual and how they can be conflicting in nature? अब देखो बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म ड्यूटी? ड्यूटी बताओ क्या है? खाली मॉरल होता है? इट कैन बी लीगल ऑल्सो. देखो द वर्ड ड्यूटी बेसिकली कम्स फ्रॉम द वर्ड ड्यू अगेन. व्हाट इज ड्यू ऑन समवन? ओके, हाँ ऑब्लिगेशन कह सकते हैं. दैट व्हाट इज वन बाउंड टू डू, व्हाट इज वन बाउंड टू डू और अंडर एन ऑब्लिगेशन टू डू. It is a kind of commitment or expectation from a person. Commitment or expectation from a person. एक लाइन और लिखो, that duty means what one ought to perform, means what one ought to perform as a moral being. नहीं है इसमें. ड्यूटी मीन्स what one ought to perform as a moral being. कि as a moral individual what you should perform, that is your duty. Now duty, what निष्काम कर्मा, तो ये कि ड्यूटी क्या है निष्काम कर्मा के अकॉर्डिंगली? एज पर योर वर्ण, एज पर योर आश्रम, एज पर योर पुरुषार्थ, यू विल परफॉर्म योर ड्यूटी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड. तो ये लिख दिया. फिर कैंट के बारे में जरूर लिखना होगा. व्हाट कैंट हैज सेड अबाउट ड्यूटी? ये 2-3 लाइनें लिख लो. आई विल एक्सप्लेन इट क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन है. यू कैन राइट दैट ड्यूटी इज एन एब्सोल्यूट कमांड. Duty, as per Kant, duty is an absolute command. That is, we must follow it. We must follow it no matter what the situation is. Full stop. Humans are rational beings. Humans are rational beings, and their most important duty is to respect the dignity of others. Most important duty is to respect the dignity of others. Full stop. And how they can respect dignity? By being moral. They can respect the dignity by being moral. बहुत ज्यादा चूचा कर रही है ये चेयर. चेंज कराते हैं चलो कल. ये बात आई समझ में आपको? देखो, what he is saying is that it's an absolute command. We have to do our duty no matter what the situation is. And because we human beings are rational people, so we have certain duties towards each other.
and the most important duty is to respect each other's dignity. And for respecting dignity, we have to be moral. Okay. And what will be our duty? Who will decide this thing? What is our duty? Categorical imperatives. The principles that he has given under categorical imperatives, that will decide whether it's a duty or not. Categorical imperative पता होने चाहिए अब आपको. UPSC has asked questions on them. नहीं पता तो करिएगा. This is your homework. तो थोड़ा सा आप ड्यूटी के बारे में ये लिखेंगे. ड्यूटी एक्सप्लेन कर दिया. देन टू पर्सपेक्टिव्स अबाउट ड्यूटी. देन व्हाट आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ड्यूटीज बताइए. फैमिली देखो, बट व्हेन यू राइट देम ना, तो एक तो पहले हेडिंग डालो, सोर्सेज ऑफ ड्यूटी. ओके. देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कॉन्शियंस का ड्यूटी, मॉरल ड्यूटीज आते हैं, और फिर आते हैं लीगल ड्यूटीज. ठीक है. तो एक दो को एक्सप्लेन करना है. जस्ट ब्रीफ 2-3 लाइंस यू हैव टू एक्सप्लेन दैट. और एक एग्जांपल दे दो. जैसे कोई कोई भी ड्यूटी उठा सकते हैं ना, लाइक रिस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स, समथिंग समथिंग वेरी यूनिवर्सल टाइप, कुछ भी डाल दो. having having kindness towards animals, बेसिक रिलीजियस ड्यूटी हो सकता है. फंडामेंटल भी डाल सकते हो, बिल्कुल. साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी. कॉन्स्टिट्यूशन है ना सोर्स हमारा. कॉन्स्टिट्यूशन है, फैमिली है, प्रोफेशन है, लॉ है. दीज आर ऑल सोर्सेज ऑफ ड्यूटीज. Or what you can do is you can make one small diagram, sources of duty, and then one or two you can explain. This also you can do. जब बहुत सारे points होगा तो make a diagram, write them, and then explain one or two. The most important one or two, just explain them. Then give another subheading, conflicting nature, और उसको लिख दो उसमें. हाउ दे कैन बी कॉन्फ्लिक्टिंग. हाँ, मॉरल ड्यूटी जैसे एग्जाम्पल. हाँ, एग्जाम्पल देना है लेकिन इसमें. जैसे एक विसल ब्लोअर का डाल दो, ट्रुथ वर्सेस लॉयल्टी. ओके. अ मैनेजर हैज टू सेव हिज कंपनी फ्रॉम अ लेबर इंस्पेक्टर, but he must also protect the rights of children who are working. तरीके से लिख दो करके कुछ. हम मीन्स वर्सेस एंड्स भी लिख सकते हैं. जैसे एक पॉलिटिशियन का क्या ड्यूटी है. हिज ड्यूटी इज पब्लिक वेलफेयर, बट ही ऑल्सो हैज टू प्रोटेक्ट हिज ओन पार्टी. पार्टी को भी प्रोटेक्ट करना है और पब्लिक वेलफेयर भी देखना है. जैसे सिंपल एग्जांपल लिखो, जैसे ड्यूटी ऑफ अ डीएम टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर ड्यूरिंग राइट्स वर्सेस हिज ड्यूटी टू अटेंड पेरेंट्स टीचर मीटिंग. सिंपल एग्जांपल. अच्छा, एंड हाउ यू कैन रिजॉल्व दीज कॉन्फ्लिक्ट्स. जैसे इसमें एक एग्जांपल आता है ग्रेडेड एब्सोल्यूटिज्म का. एब्सोल्यूटिज्म क्या है ये बताइए पहले. यूनिवर्सल का ही दूसरा नाम है एब्सोल्यूटिज्म. दैट सर्टन
certain moral standards are absolute. They must be followed in every situation. Just not lying, not killing. Okay. But graded absolutism says that certain morals are more important than the others. That like lying, like not lying or saving the life of someone. Which one is more important? Saving the life. So if in order to save the life of someone you have to lie, then it is correct. तो इसको ग्रेडेड एब्सोल्यूटिज्म कहते हैं. तो कभी भी अगर कॉन्फ्लिक्टिंग ड्यूटीज होगा तो ग्रेडेड एब्सोल्यूटिज्म वी कैन यूज. बिल्कुल यस. ये अप्रोच है एक. हाँ बिल्कुल यस. हाँ. डिलेमास कॉन्फ्लिक्ट सेम चीजें हैं. नथिंग डिफरेंट. ये पता है इन यूपीएससी स्पेशली इन दिस राजेंद्र नगर मार्केट ना, द होल आइडिया इज टू confuse, is to complicate the thing. और यूपीएस इतना नहीं सोचता when he is giving the question ना, and the evaluator is reading your answer, for him all these things are same. You know na, the level of university professors, how they used to check your copies. The same professors are checking copies of UPSC also. So you are overthinking, they are not. कि conflicts अलग हैं, dilemmas अलग हैं, and there would be hundreds in Rajendra Nagar who will tell you that how they are different. Okay, but it's nothing about nothing. It is nothing to do. सब complicate कर रहे हैं चीजों को. Things are very simple. चलिए. Next question, question 4. Your most parents today are concerned about securing the future of their children, but in the process they forget to build the character of the child. Do you agree with this statement? What can be the repercussions of such an approach, and what parents should actually do for their child's future? So basically, role of family in inculcating values. How you can start such answers? अगेन स्पेसिफिक कोई क्राइम बताओ. कॉफी ले आओ यार. और नहीं नहीं नॉर्मल कॉफी बाहर से लाओगे. नॉर्मल कॉफी दे दो एक जाके. हाँ निर्भया के जुवेनाइल का एग्जांपल दो. यस यू कैन. और यू कैन गिव सम एग्जांपल फ्रॉम एपिक्स आल्सो. हाँ यस. हाँ while playing PUBG and mother stopped the child from playing PUBG and he shot her mother dead. हुआ अभी दिल्ली में. वो पाकिस्तान वाला मत लिख देना डैड. वो उसमें नहीं नहीं पता. हाँ. आज तक वगैरह देखो, जी न्यूज आज तक, यू विल गेट टू नो अबाउट दीज न्यूज ऑल्सो. आई मीन a boy and a girl, they girl तो क्या थी, she was a woman with 4 children from Pakistan. She fell in love with a boy in Delhi. हाँ वो पबजी पर ही था सारा. So that thing you can write. Like in Nagloi last year, one student stabbed his teacher also because he was ridiculed by the teacher in the class. So in order to take the revenge, he stabbed the teacher. या फिर इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं राम और दुर्योधन का कॉन्ट्रास्टिंग. That Rama, he gave away everything and yet in the end he got everything because of ethics. भरत को सब मिला, उसने सब छोड़ दिया. And Duryodhan got everything, but he lost everything because of lack of character. So इतने contrasting examples you can give. In fact, history is full of examples which shows that character development is more important than providing wealth to secure future of children. और लाइफ से लिखो अपने. पता है, डोंट बी बुकिश इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. लाइक
like what you see around you. Today, the parents are becoming hedonistic. They have a narrow conception of life. How they want to secure the future of their children? By earning more and more money for them. Okay. So they are all time busy in earning wealth. And in the process, they forget their parents. So the child is also learning the same. Tomorrow, he will also get busy in earning money and he will forget his parents. अभी recently हुआ था ना कि that a woman died in a Mumbai flat and her body was discovered 10 days after, and all her children were in US and they were earning good also. But what's the point of that money? Huh? 10 days, 10 days. Years में तो क्या वो भी जब I mean neighbors को when they start the body start getting rotten ना तो decayed, तो the smell was there. ये देखो, this thing will come with practice. The problem is that people are not doing practice in ethics. Okay, the more you practice, the more you will learn learn the art of writing more in lesser words. तो लिखना शुरू करो. That is most important. If you are giving mains this time, at least write 3-4 papers of ethics. First 1 or 2 paper, you will get really stuck, okay, because you will be thrown out of your comfort zone. But if you stay patient, if you be disciplined, you will certainly uh, get to the higher level of learning. आराम से आप सीख जाओगे, कोई मुश्किल नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है. नहीं, आप इसमें एग्री कर सकते हैं. अगर नहीं है, अगर है तो लिख दो काउंटर पर्सपेक्टिव. इट इज नॉट देयर, आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट दो स्टार्टिंग में. आई कंप्लीटली अग्री विद दिस स्टेटमेंट. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. हम्म. हाँ, यस यस, तारे जमीन पर वेरी गुड एग्जाम्पल. हाँ, but here we are not talking about poor parents. Okay, but that poor parents, see, they are spending time with their children. They are at least teaching them the value of hard work. हाँ, बहुत सारी चीजें हैं. हाँ, वो but we are not talking about those cases. Basic general situation we are talking about. हाँ, importance of character, value laden तो नहीं था ना. No values were there that violence is wrong, this is wrong, game is not important, life is outside this mobile phone. जैसे एक वो बॉयज लॉकर रूम, एक और एग्जांपल आता है, वो एक केस आया था ना, आई थिंक 1 or 2 years बैक. बॉयज लॉकर रूम इंस्टाग्राम था. हाँ, उसका एग्जांपल दो. दैट द काइंड ऑफ मैसेजेस दे वर सेंडिंग टू ईच अदर. हाँ, लिख सकते हैं. यस यस, एनीथिंग विच इज लॉजिकल यू कैन राइट इट. There is no restriction that you cannot quote from movies, you cannot quote from there, you can quote from everywhere, anywhere. Greed increase हो रहा है, narrow juvenile delinquency is increasing, depression also, yes, you can write. वो जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, पूत सपूत तो क्यों धन साचे, पूत कपूत तो क्यों धन साचे. So basically, if your son is good, then what's the need of earning money for him? He will earn his own money. And if your son is bad, then also what's the need of earning money? He will destroy everything, he will waste all the money. So rather than earning money for your children, give them character, give them values. हाँ, इंग्लिश में लिख दो ना इसको. चल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा इसमें हाउ विल यू डू इट, हाउ यू कैन इनकलकेट वैल्यूज. सेकेंड पार्ट है ना क्वेश्चन का.
हम्म। हम्म। हाँ, बेसिक रिलीजियस स्क्रिप्चर जेनरिक हो गया। रामायण थोड़ा सा बोलो थी, स्पेशली चिल्ड्रन दे मस्ट बी एक्सपोज टू रामायण, और आफ्टर 13-14 years दे मस्ट बी एक्सपोज टू महाभारत, बिकॉज महाभारत इज मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऐसे ही कोई भी मतलब अलग धर्म से भी ले सकते हैं, इन ऑर्डर टू कीप इट सेक्युलर, की स्टोरीज फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, फ्रॉम द लाइफ ऑफ गुरुज, फ्रॉम द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, यस, दे आर ग्रेट ऑब्जर्वर्स, ऑब्जर्वेशन लर्निंग मैक्सिमम होता है। So if you're doing things in a particular manner, they will observe and do it. जैसे child rearing practices you can write about. हाँ, joint families का भी, like take them, take them to the I mean like birthdays can be celebrated, like not in fancy hotels but with the poor children or in the orphanage. तो specific examples दो। Like अभी recently I was listening to Sudha Murthy. So Sudha Murthy, she always used to talk about equality with her children. So one day the children countered that we are sitting on the dining table and our servants are eating sitting on the floor. So from that day, after they eat, the servants will also come on the dining table and they will eat there only. So this particular case, particular incident you can write. तो चाहे दो ही पॉइंट लिखे, but these things will fetch you more marks. नहीं, 5 points, 5 basic points taught by me will fetch you lesser marks than the points you will get by writing this. 2 points like this, more marks you will get. ठीक है, फिर टीनेज पीरियड जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होता है, टीनेज पीरियड इज द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ, आइडेंटिटी क्राइसिस आर देयर। So especially their children, OTT platforms वगैरह पे they should have parental controls over there, what the child is learning, what he is watching. Sex education करवा दो बच्चे का, proper sex education should be given to him. हम्म। हाँ, जेंडर सेंसिटाइजेशन, अलग सेक्स एजुकेशन की जगह जेंडर सेंसिटाइजेशन भी लिख सकते हैं, यस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, that civil servants in India today are neither civil nor servants. Discuss in context of some recent happenings. What needs to be done in this regard? So basically from where I have taken this line? हाँ, वो तो था, ये नेहरू जी का लाइन है एक्चुअली। ये स्क्रीन हैंग हो गया है, हैंग हो गया है स्क्रीन, ये वाला। नहीं, ये तो हो गया, इस स्क्रीन को बंद करके नोट पे जाओ। दैट्स व्हाई आई लव वाइट वाइट बोर्ड। एक बस डस्टर उठाओ और एक पेन, हो गया काम। अभी भी हार्वर्ड वगैरह में दे यूज दोज ब्लैक बोर्ड्स ओनली। अरे हैंड आउट है ना आपके पास? हाँ, तो बेसिकली जब पहले लाइक बिफोर इंडिपेंडेंस these services were called Indian civil services. So Nehru ji once said that Indian civil services are neither Indian nor civil nor servants. Okay, तो वहाँ से आए,
मैंने इसको इम्प्रोवाइज किया. So certainly yes, we can say that thing, that civil servants are the only servants who are rude to their masters and still are able to maintain their job. They are rude. No, they are very cunning towards their masters. We are the masters, right? And they show VIP culture in front of us, and yet they are able to maintain their position. फिर एग्जाम्पल्स आप दीजिए इसके अंदर. जैसे मणिपुर का आपने एग्जाम, त्रिपुरा का था वो, त्रिपुरा डीएम हु गेट क्रैश्ड इनटू द मैरिज. एक त्रिपुरा का डीएम था, आप लिख लो, नहीं मिला तो आप गूगल करिएगा उसको. फिर जैसे वो करनाल सब एसडीएम था करनाल का, आयुष सिन्हा, ही सेड ना दैट विल ब्रेक दी हेड्स, सर फोड़ देना उनका, किसान का, फार्मर्स का. फिर एक छत्तीसगढ़ डीसी का भी आता, ही स्लैप्ड अ बॉय इन पब्लिक एंड ही स्नैच्ड हिज फोन एंड ब्रोक इट आल्सो. छत्तीसगढ़ डीसी. अच्छा ये तो बताओ सिविल का मतलब क्या होता है? That they are neither civil, but what do we mean by civil? पोलाइट होते हैं, रिस्पेक्टफुल होते हैं. सिविल का मतलब क्या होता है? दे आर पोलाइट, दे आर रिस्पेक्टफुल, दे आर रूल अबाइडिंग, लॉ अबाइडिंग बेसिकली, एथिकल, प्रोफेशनल होते हैं. दिस इज व्हाट वी मीन बाय सिविल. ओके, तो ये सब हम लोग लिखेंगे, बट here you will provide the counter perspective also, not that not everything is shady. There are some good civil servants also. Okay, तो यहाँ पर फिर वो सेवा परमो धर्मा, या फिर दो तीन एग्जाम्पल हुए, आर्मस्ट्रॉन्ग पामे, या फिर मेनी एग्जाम्पल्स यू विल गेट. अब डाल देना, हाँ टीना डाबी डाल देना. यस. ओके, so what needs to be done? Empathy, compassion needs to be taught. Proper training कराइए, empathy develop कराइए, sensitivity training, attitude change, इमोशनल इंटेलिजेंस, यस, एथिकल कोड्स को डेवलप करिए. जैसे रिसेंटली व्हाट फ्यू इयर्स बैक मोदी जी सेड दिस थिंग, that the new IS recruit should spend more time at the ground level so that they can develop empathy with the people. Okay, जैसे भारत दर्शन क्यों कराते हैं? Why this भारत दर्शन is conducted in training? To get familiar and also to develop empathy with the people, especially at the ground level. हाँ हाँ, मिशन कर्म योगी you can write. मिड करियर ट्रेनिंग ऑल्सो, यस यू कैन राइट. फिर जैसे वीआईपी कल्चर को कैसे खत्म करें, वीआईपी कल्चर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. एनोनिमिटी इज ऑलरेडी देयर. वो अलग हो गया, दैट इज अ डिफरेंट केस एक्चुअली. I will come to that case also, that whether civil servants should use social media or not. So this is done. Let's move to the next question. Question number 6. Write short note on the following: communalization and media ethics. हाँ, थोड़ा सा कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कि सिविल का बेसिक मीनिंग क्या है. ओके. हाँ हाँ, दे सकते हैं बिल्कुल, यस. कि सर्वेंट नहीं है, मास्टर्स हो गए हैं, वीआईपी कल्चर चल रहा है आजकल. सर्वेंट तो वो होता है ना जो सर्व करता है, हु ओबेज योर कमांड, हु इज अकाउंटेबल टू यू. सर्वेंट्स का ये मीनिंग हुआ. छोटा वर्ड है, कॉन्सेप्ट होना चाहिए. 3 लाइनें देखो मैंने सर्वेंट पे बोल दी. तो दीज 3 पॉइंट्स यू विल मेक एंड यू विल राइट. सर्वेंट क्या होते हैं? सर्वेंट हु सर्व्स यू,
who obeys you, who are accountable to you. जैसे मैंने इसमें एंड करते हुए आप लिखते हैं जवाहरलाल नेहरू सेड दैट इंडियन सिविल सर्वेंट्स आर नॉट इंडियन सिविल एंड सर्वेंट, बट इनके ऑपोजिट सरदार पटेल ने क्या कहा था, दैट द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। तो ये दोनों को लिख दो और लिख दो कि टाइम एंड कंडक्ट ऑफ सिविल सर्वेंट्स विल डिसाइड हु इज प्रूव्ड रॉन्ग। अब देखो मीडिया का कम्युनलाइजेशन हो रहा है। वाई हैव गिवन दिस, बिकॉज लास्ट ईयर आर जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे एन वी रमन्ना, he expressed his concern that media is giving communal color to almost every news. Examples दो। हम्म? हिजाब का, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो उसको बेसिकली इट हैज बीन प्रोजेक्टेड that this law is specifically made for the Muslims. I mean, this law will affect every community. Even, in fact, Hindus will be the one who will be most affected. But it is projected as if it is made in order to dominate Muslim community. कि हिंदूज को ऐसे शो करेंगे कि नहीं देखो हम मुस्लिम को दबा रहे हैं, वी आर कंट्रोलिंग मुस्लिम थ्रू यूसीसी। और बताइए, अरे लव जिहाद, हादिया वाला केस था ना जो, तो उसको ऐसे प्रोजेक्ट किया कि इट्स अ लव जिहाद। जैसे अभी फार्मर्स वो हुआ आपका फार्मर्स प्रोटेस्ट, तो उसको क्या बोला, खालिस्तानी इशू, खालिस्तानी बोल दिया ना, रिलीजन से जोड़ा। देन कोरोना टाइम्स, तबलीगी जमात। तो बस ऐसी एग्जाम्पल, दो तीन एग्जाम्पल्स हो गए। हॉस्टाइल लैंग्वेज अगेंस्ट माइनॉरिटीज, जैसे तो मुस्लिम जो वो आते हैं डिबेट्स करने के लिए, तू मुल्ला मौलवी इस तरीके से बोलते हैं, तो हॉस्टाइल लैंग्वेज इज यूज्ड। व्हाट शुड बी द बेसिक एथिक्स ऑफ मीडिया, क्या एथिकल प्रिंसिपल्स होने चाहिए मीडिया के, बताइए। ऑब्जेक्टिव, अनबायस्ड, इम्पार्शियल एंड सोशल हार्मनी उनको मेंटेन करना चाहिए, सोशल गुड पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज मस्ट बी अपहेल्ड। And see, nobody can prepare you for these type of questions. Again, tell you कि all the questions that we will discuss in the class, na UPSC won't ask a single one. So develop the habit of getting your own idea. Social justice, yes संदीप। तो ये कम्युनलाइजेशन एंड मीडिया एथिक्स। जैसे अभी रिसेंटली वहां हुआ था ना हरिद्वार में, क्या हुआ था, धर्म संसद, आई थिंक दिल्ली ऑल्सो दे मेट। धर्म, उस पर क्वेश्चन आ सकता है धर्म संसद के ऊपर कि वेदर सच थिंग शुड बी अलाउड और नॉट। उत्तराखंड में हुआ था, आई थिंक इट। हम्म। हाँ हाँ हाँ। तो हरिद्वार, हरिद्वार मेरे को याद है, देख लेना, हरिद्वार देहरादून। अनेकांतवाद पता है आप लोगों को, ऑल ऑफ यू नो व्हाट अनेकांतवाद इज, अंध गजा न्याय, दैट स्टोरी यू गाइस नो।
See, Jainism, if somebody asks you that what is the greatest contribution of Jainism to mankind, what will be your answer? Most of the people they write non-violence and everything, but I think Anekantvad, especially in the present context, is very important. Anekantvad clearly says that truth has multiple sides. It has truth has multiple aspects and is complex. So to understand complete truth, we have to look into the perspective of all religions. In fact, Jainism देखो अकेला है. In Islam, they say Allahu Akbar, Allah is greatest. In Hinduism also Krishna said this thing कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, सब मुझसे ही आते हैं. तो God, supremacy of God has been mentioned. But only in Jainism it has been given that all religions, including Jainism, provide partial information about truth. They are not giving you a complete picture. If you want complete picture, you have to read about other religions also. जैसे अंधगजा में आया ना कि there was a group of blind men. So once they went in order to experience the shape of a elephant, तो किसी ने कान को छुआ, somebody touched the ear, somebody touched the feet, and they gave partial truths. The complete truth will come, and all these partial truths are integrated. नहीं, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ आपको, इतना नहीं लिखना है, बस एग्जाम्पल्स लिखो. इसको कॉन्टेक्स्ट, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट कि इन द प्रेजेंट वर्ल्ड वेयर मॉब लिंचिंग, काउ विजिलेंटिज्म, xenophobia, these things are increasing, their अनेकांतवाद theory has become very relevant. इसको हम लोग इंटेलेक्चुअल प्लूरलिज्म भी बोलते हैं. इंटेलेक्चुअल प्लूरलिज्म. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल डाल सकते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, इसमें एक और है सोशल माइंडफुलनेस. ये क्या होता है, पढ़ा है कभी आपने? बेसिकली जापानीज कॉन्सेप्ट है. इसमें एक लाइन लिख लो दैट सोशल माइंडफुलनेस रेफर्स टू बीइंग thoughtful to others and considering their needs before making decisions. Like suppose you want to buy a pastry. You entered a pastry shop and there are only 3 pastries are left, 2 strawberry and 1 chocolate. There is one more guy who's standing behind you. Now which pastry you will order? One pastry you have to eat. कौन सी order करोगे? Why strawberry? So that the guy behind you get both the choices. This is social mindfulness. If you are passing through a gate and you keep the gate open so that the guy next to you also gets in, that is social mindfulness. नहीं आई बात समझ में? If you keep the seats clean, suppose you are sitting somewhere, okay, and when you go away, then you clean the seat before going, that is social mindfulness. If you are in a washroom, you are using Indian used toilets, as such they are the last person to use that toilet. Okay, they don't realize that there will be others also who will come after him. Okay, basic toilet etiquettes are not there with the Indians. So 2-3 एग्जाम्पल डाल दो, बन गया सोशल माइंडफुल. एंड इंडियंस आर among the last 3 nations in social mindfulness index. Japan is at the top and India is in the last 3 nations. 31 countries का ये कुछ सर्वे हुआ था last year.
बल्कि आपको पता चल जाए ना कि दी पर्सन हु इज कमिंग नेक्स्ट ही विल बाय अ स्ट्रॉबेरी वन, we will specifically buy that one so that the other guy don't get the choice. हाँ, लाउड म्यूजिक नहीं चलाना जैसे रात को, यस, सोशल माइंडफुलनेस। यस यस। देखो, 90% ऑफ द जनता वोंट बी एबल टू नो दीज थिंग्स, ओके, बट फ्रॉम द टॉपिक ओनली you can derive some ideas. Social mindfulness, we should be mindful about what is happening around you, that's it. And then based on that, 1 or 2 points at least you can write. Question number 7. That what in your opinion plays a more important role in deciding what is right or wrong, your emotions or your reason? What different schools of moral philosophies have to say about it? अब ये डिबेट आ गया बेसिकली। अगर साइंस उसमें देखें टेक्निकल टर्म्स में, तो वी हैव 3 schools: moral rationalism, sentimentalism, and empiricism. Reason, emotions, evidence. You understand the difference between them: reason, emotions, and evidence. These are the 3 things which helps us to make every decision in our life. Like suppose you are at your home and you want to go to a restaurant. You know that your booking is at 10:30 and restaurant is half an hour away from my home. So at what time you will start from your home? 10. So this is reason. This is basic logic. You entered that restaurant and you saw that out of 30 guests over there, 25 are drinking tomato soup. So you also order tomato soup. What is this? Evidence. But you like manchao soup. So even though the other people are drinking tomato, you ordered manchao. So that is sentimentalism, emotions. And these 3 will always help you out. These 3 are also part of attitude. How attitudes are formed? Cognitive, that is reason; affective, that is emotions; and behavioral, that is evidence. Basically past experiences and evidence. What are the 3 marks given by Bhagavad Gita? Gyan marg, Bhakti marg, and Karm marg. Karm basically evidence का होता है, Bhakti emotions, and Gyan is reason. So most of the philosophy has talked about all these 3. And this is a classic debate, and even essays are coming on this debate. Just abhi last year there was an essay that history is the victory of scientific man over the romantic man. The scientific man basically using reason, or scientific man evidence भी use करता है, and the romantic man uses emotions. That reason always wins over emotions, and that's the problem of mankind actually. Whereas Indian philosophy has given more weightage to emotions over reason. और देखो, one more thing you should understand: the debate is not that whether reason or emotion decides ethics. The debate is that which one plays more important role. Most of the philosophers believe that both reason and emotion play a role, but which one plays a greater role, reason or emotion? Now some philosophers who have given more weightage to reason. बताइए. Aristotle, Socrates, Plato. Socrates ने तो ये भी बोला था. In fact, he an unexamined life is not worth living. In fact, he inspired people to ask questions on the basis of dialectics.
रीजन बेस्ड आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली. सो सोक्रेटिस एग्जाम्पल, एरिस्टोटल ने कहा डेट मैन इज अ रैशनल एनिमल. सबसे बड़ा रीजन की बात किसने करी थी? डेकार्टे. आई थिंक देयरफॉर आई एम. उन्होंने तो कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया इमोशन और एविडेंस को. ही सेड दैट ओनली थ्रू रीजन वी कैन आइडेंटिफाई व्हाट इज राइट और रॉन्ग. तो डेकार्टे का एग्जाम्पल दीजिए. कॉन्स्टिट्यूशन एग्जाम्पल कैन बी गिवन. नो. हाँ. नहीं नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कॉल्स फॉर डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी. तो साइंटिफिक टेम्पर क्या है? रीजन बेस्ड अप्रोच हुआ ना. Most of the government decisions are based on reason only, like making of multi-purpose projects, displacement of people. ये सब reason. Utilitarianism is based on logic. तो ये schools आपको Kant has talked about logic, that man is a rational animal. Kant ने भी यही बोला. Ethical rationalism he followed. पर इमोशंस की बात किसने करी है? रूजो. हाँ, रूजो का एग्जाम्पल दे सकते हैं. That what is right and wrong should be based on our emotions. Emotions will play a role. सोशल कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई किया था उन्होंने. मॉडिफाई नहीं किया था, बेसिकली ही रिजेक्टेड हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट. Hobbes says that the king will decide right and wrong. He said that the king will only protect our property, he will only protect our rights, but what is right and wrong would be decided by ourselves. And we will use our conscience, we will use our emotions to decide what is right and wrong. और इंडियन फिलॉसफी मैंने बोला ना, महाभारत ने क्या कहा है? लिख लो महाभारत का. That moral sentiment is born in human heart. Moral sentiment is born in human heart, comma, which is full of empathy for others. Which is full of empathy for others. इसको जैसे यू नो दैट स्टोरी फ्रॉम महाभारत ना, दैट यक्ष एंड दैट युधिष्ठिर स्टोरी. तो यक्ष asked this question that what is the highest dharma? So Yudhishthir replied that compassion is the highest dharma. Kindness is the highest dharma. So इंडियन फिलॉसफी में इमोशंस को सेंटर पे रखा गया है. देन डेविड ह्यूम ने क्या कहा? ही सेड दैट रीजन इज द स्लेव ऑफ इमोशंस. रीजन इज द स्लेव ऑफ इमोशंस. Like the decisions are based on emotions and then reason pave the way. Reason only provides us the logic, it only provides us the fact, but the decisions are taken on the basis of emotions only. Okay, like you people will become an IS officer. The emotional component is higher. Okay, but how you will become an IS officer, that thing will be decided on reason. जैसे लाइक कोई भी इन्फ्लुएंशियल स्पीकर होता है, चाहे मोदी जी हैं और इट इज़ अब्राहम लिंकन और एनी जवाहरलाल नेहरू, दे विल ऑलवेज फर्स्ट ऑफ ऑल मेक एन इमोशनल पिच टू कनेक्ट विद यू, एंड वंस द कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड देन दे विल कन्वे रीजन, देन दे विल कन्वे इंफॉर्मेशन. सो आइडियली रीजन एंड इमोशन शुड गो टुगेदर. ओके, बट अगर एक को चुनना हो तो क्या चुनोगे? बीइंग अ सिविल सर्वेंट, व्हाट विल यू गिव प्रेफरेंस? Reason. In public life, reason. In private life, emotions will have a slight edge. और कानून में, जुडिशरी में,
एविडेंस, कानून सबूत मांगता है, तो एविडेंस इज अप्रोच. ऑल राइट. हाँ, तो योर ओपिनियन अगेन, बिकॉज यू आर राइटिंग एग्जाम फॉर बीइंग अ सिविल सर्वेंट, रीजन शुड हैव अ स्लाइट एज. ओके, a mix would be used, but reason will have an edge over emotions. हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. रीजन को, बिकॉज वी आर डीलिंग इन पब्लिक लाइफ, तो इन पब्लिक लाइफ रीजन ज्यादा रोल प्ले करता है, बिकॉज रीजन इज समथिंग विच इज कॉमन इन ऑल ऑफ अस. हाँ, देना है, बिल्कुल बिल्कुल. यू हैव टू बी क्लियर अबाउट योर पोजिशन. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे ट्राई टू राइट द मिडिल पाथ, नहीं नहीं दोनों है दो, बट यू हैव टू बी वेरी क्लियर. हाँ, yes, that is also a very good approach. कि we needs to be emotionally intelligent so that we can balance, we can integrate both emotions and reason. हाँ हाँ, yes yes yes. But again, if the question is specifically asking which one, which what is your opinion, which one is better, then you can say that reason has a slight edge over emotions in public relations, and in personal relations, emotions will have a edge over reason. कंक्लूजन बॉडी में तो एक्सप्लेन कर देंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन यू विल राइट 3-4 पॉइंट्स, देन फॉर इमोशंस यू विल राइट 3-4 पॉइंट्स, एंड देन बैलेंसिंग एक्ट. जैसे प्लेटो ने भी अपना जो ट्रिपेटाइट मॉडल ऑफ सोल था, ही टॉक्स अबाउट रीजन, ही टॉक्स अबाउट लॉजिक एज वेल एज इमोशंस. लॉजिक एंड इमोशंस बोथ आर पार्ट ऑफ आवर सोल. सिमिलरली भागवत गीता ऑल्सो सेट ज्ञान मार्ग ऑल्सो एज वेल एज भक्ति मार्ग, दोनों की बात करते हैं. But this question is very important, and in essays also such type of questioning is there. Next question is that wise people will hold doubts about the health and progress of any civilized society that fail to produce a decent number of eccentrics during every generation. Discuss this statement in journal and also distinctly bring out how eccentrics can reduce the culturally induced ethical blindness of people in a society. बताइए क्या, have you understood this question? Read it first. Eccentrics, you understand? Pe- critical evaluation is very necessary, and it is done by eccentric. Or eccentrics are those who have unconventional thought process, who go against the flow. Otherwise, what will happen if such people are not there? The society will become stagnant. इसमें एग्जाम्पल दीजिए इंडियन सोशो कल्चरल रेनेसांस, यूरोपियन रेनेसांस का एग्जाम्पल दीजिए. eccentrics, come on, give me some examples of eccentrics. देखो, अच्छा, one more thing. Ashok Khemka, Raja Ram Mohan Roy, try to avoid them because these examples have become cliched. Okay, they are used so much that I believe that they will only create frustration among the evaluators. So try to avoid them. हाँ, अम्बेडकर यस, ज्योतिराव फूले बिल्कुल यस, अब्राहम लिंकन यस, स्लेवरी, इबॉलिश स्लेवरी, हाँ, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग. और फिर देखो, नॉट ओनली द सोशल रिफॉर्मर्स बट ऑल्सो इन फील्ड ऑफ साइंसेस. एप्पल क्यों हिट हुआ? इट इज बिकॉज ऑफ द इनोवेशन, इट इज बिकॉज ऑफ द अनकन्वेंशनल थॉट प्रोसेस. Subhash Chandra Bose was an eccentric. Nehru was an eccentric in Congress in 1920s. तभी तो पूर्ण स्वराज की बात हुआ ना, तब तक तो देवर आस्किंग ओनली फॉर डोमिनियन स्टेटस.
Yes, to some extent, yes, Buddha also. Present उसमें दो आप, मलाला यूसुफजाई, ओके, दैट ग्रेटा थनबर्ग, थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से दो ना. जैसे मैनी, गौरी लंकेश, अभी रिसेंटली मैनी रैशनलिस्ट हैव बीन किल्ड. गौरी लंकेश, दभोलकर, डॉक्टर दभोलकर, पंसारे, कलबुर्गी, प्रोफेसर कलबुर्गी, सुने ये नाम आप लोगों ने? सो दीज वर ऑल रैशनलिस्ट हु गॉट किल्ड. अन्ना हजारे तो, हाँ, हाँ, करप्शन के अगेंस्ट कह सकते हैं अन्ना हजारे, बट थोड़ा अब उनका पॉलिटिकली वो ऐसे ही हो गए हैं. जैसे इसमें एक और, एलन मस्क, हाँ, एलन मस्क इज एन eccentric, यस. जैसे इसमें एक टर्मिनोलॉजी आती है, कल्चरली इंड्यूस्ड एथिकल ब्लाइंडनेस. ये पता है क्या होता है? ये लिख लो. कल्चरली इंड्यूस्ड एथिकल ब्लाइंडनेस, या फिर उसको मॉरल मायोपिया भी बोलते हैं. इसमें होता है मॉरल मायोपिया और कल्चरली इंड्यूस्ड एथिकल ब्लाइंडनेस मींस योर इनएबिलिटी टू लुक इनटू द एथिकल डायमेंशन ऑफ योर एक्शंस. Yes, and may cultural harmony which leads to stagnation. Glass ceiling effect, yes. मॉरल मायोपिया समझ आ गया ये? जैसे एग्जाम्पल है मॉरल मायोपिया के, जैसे बर्निंग फायर क्रैकर्स ऑन दिवाली, चाइल्ड लेबर, जलीकट्टू, सेम सेक्स मैरिजेस, नॉट अलाउइंग देम, नॉट अलाउइंग वुमेन टू एंटर टेम्पल्स. दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ मॉरल मायोपिया. इसमें और एक और टर्म आता है, सोशल डार्विनिज्म. सुना ही आपने? ये सोशोलॉजी वालों को पता होगा, एंथ्रोपोलॉजी और सोशोलॉजी वालों को. हर्बर्ट स्पेंसर. सॉरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो उसने बोला था डार्विन ने, हालांकि बोला इन्होंने ही था, हर्बर्ट स्पेंसर ने पहले. तो बेसिकली ही सेज दैट द प्रिंसिपल्स ऑफ एवोल्यूशन also apply to the societies. Principles of evolution also applies to the society. It says that a society cannot remain stagnant. Either it can move forward or it can go back, but it can never remain stagnant. यही बात समझ. इसमें क्लासिक एग्जाम्पल आता है नोकिया का, नोकिया फोन्स. नोकिया, they were the market leaders. They did nothing wrong, but they never adapted. They became stagnant and they fell back. नहीं है समझ बात? So that happened, see, around somewhere around 15th century, both the Islamic world and the Christian world both were at the same level. But then what happened, that the Christian world developed and the Islamic world went behind. जिसमें एक क्लासिक एग्जाम्पल आता है प्रिंटिंग प्रेस का. Somewhere around 15th century printing press was invented, but the Arabic countries, they said no to the import of printing press. They said कि printing in Arabic would be haram, it would be anti-Islamic, and for 300 years printing press was not allowed in an Islamic world. वेस्ट में आ गया प्रिंटिंग प्रेस. व्हाट हैपेंड, इट लेड टू द स्प्रेड ऑफ नॉलेज. द बुक्स वर अवेलेबल एवरीवेयर, दे गॉट चीप, एंड देयर वाज अ नॉलेज रेवोल्यूशन. एवरीबडी गॉट नॉलेजेबल, दे स्टार्टेड मेकिंग न्यू इन्वेंशन. और वही 300 साल, नाउ वी कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द इस्लामिक एंड द क्रिश्चियन वर्ल्ड. ऑल राइट,
वो कहते हैं ना वो पलों ने खता की सदियों ने सजा पाई, समथिंग लाइक दैट. I mean, small decisions which were made in moments. Okay, and the whole centuries, many ages suffered because of those small decisions. लम्हों ने खता करी, नॉट पलों ने, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई. So ये social Darwinism is a very important idea which you can use. जैसे अब उसके साथ क्या हो रहा है, तालिबान के साथ क्या हो रहा है, what is happening? They stopped moving forward, so now they are going backward. They cannot remain still. Still is not an option in any society. Same happened with Indian society also. If we will stop moving forward, we will go backward, and this is happening also now. So this is the idea. Let's take the last question for today. इसमें जैसे सेम सेक्स मैरिजेस वगैरह गे राइट्स का एग्जांपल दे देना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, connected with the current affairs. Now the quotations, peacefulness in the face of a grave wrong that could only be stopped by violence would be a sin. Saint Augustine, a medieval era philosopher. Now see, most of you have problem in these quotation based questions, but I don't really understand that why this problem here. I mean, the problem is not there in the type of question but in your mind. Somewhere you guys have developed a phobia that these questions are difficult, but these are very open ended questions in which you can write almost anything. How you can write it? In the first paragraph, just write down the basic meaning or the basic essence of the quote, that what this quote is talking about. Okay, then 2-3 philosophers who have talked or who have talked about the similar idea, okay, or who have given more weightage to the war, to the violence, as per this quote. Then in present context, why this quote is important. Present context में क्यों important है ये quote. हाँ, कोई बात नहीं, context छोड़ दो ना, from the quote only you will understand the context. Or if even if you don't know the context, without context also you can write the meaning. Meaning तो पता होगा ना, meaning you can write. Then current perspective, why the quote is important. Then civil services perspective दे दो एक line, that for civil servant how this quote has importance. Okay. Then if space allows, you can give counter perspective also. Opposite of this quote also you can write. So many things are there to write in it. So basically what this quote is. Understood? I mean, not standing to, I mean any injustice which can be stopped by violence, and you are remaining non-violent in that situation, that you are committing a sin. So in order to fight a dharma, sometimes you have to raise your weapons. Sometimes you have to put up the gun in order to bring the gun down. Violence is required. कहते हैं ना कि कई बार I was watching this series, so he said that in order to become Gandhi, sometimes you have to become Hitler also. Gandhi, situation of Gandhi will come only once you have shown your form of Hitler. Okay, then people won't fight you. Then the peace will commence. हाँ, आर्मी डिस्प्ले, हाँ तो बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है. हाँ, अरे इसमें तो यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत सब आता है कि whenever the dharma will increase in the society, when the demons will attack the rishis, I will take birth and I will destroy the bad people. Ramayana also did the same. Violence has been there. In fact, Marx का लिखो ना, Marx also said ना कि violence is the way of nature. Just like the struggle in nature is not non-violent,
Similarly, the class struggle will also be will also be violent. क्या था, नो बर्थ विदाउट ब्लड, मार्क्स ने बोला था ना, नो बर्थ विदाउट ब्लड. फ्रेडरिक नीश ने भी यही बात बोला है. ही हैज ग्लोरिफाइड वॉर. इंडिया वुड नेवर गॉट हिज डेमोक्रेसी इफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर वुड नॉट हैव बीन देयर. कभी नहीं मिलता इंडिया को डेमोक्रेसी, इंडिपेंडेंस. People learn the value of peace only when they have seen the horrors of war. Are you getting my point? And every generation forgets this thing. Every second generation. Like it's been time. जब हो गया Iraq and all those wars, Afghanistan, it's been time. So now people are again craving for war, and that is why this Russia-Ukraine happened. Now they will understand that war is bad. Then 10-15 years of peace, and then again war will happen. So Frederick Nietzsche का example, अर्जुन ने बोला था ये महाभारत में. He said one thing, that I see no being in this world without violence. I see no being in this world, no being in this world without violence. बिना violence के तो कोई है ही नहीं ना. It's a universal phenomena. यूटिलिटेरियनिज्म भी वायलेंस को सपोर्ट करता है, नेशनलिज्म भी वायलेंस को सपोर्ट करता है. फाइट अगेंस्ट आइसिस, फाइट अगेंस्ट बोको हराम, एवरीथिंग रिक्वायर्स स्ट्रेंथ, पावर. कहते हैं ना वो सहनशीलता, क्षमा दया को तभी पूछता जग है, बल का दीप चमकता उसके पीछे जब जगमग है. तो रामधारी सिंह दिनकर has said this thing, कि your kindness, your tolerance would be appreciated by the world only when it is backed by power. Strongest people are least involved in the fight. But इसके काउंटर पर्सपेक्टिव में what you can write? गांधी जी, an eye for an eye will make this world blind. एक और बात उन्होंने बोली थी, that as long as people use violence to combat violence, they will get violence. As long as people use violence to combat violence, comma, they will always have violence. Yes, Tanmay, forgiveness is attribute of strong. बट ये कि देखो, एक एक लाइन और लिखो, डेट वायलेंस मेंटेन्स स्टेटस को बट पीस लीड्स टू प्रोग्रेस. ये एक लाइन लिख लो, बैलेंसिंग अप्रोच. वायलेंस मेंटेन्स स्टेटस को, whereas peace maintains progress, whereas peace leads to progress. Same यही quote you can write for revenge and forgiveness also. Revenge can only lead to status quo, but forgiveness will lead to progress. Sorry? हाँ, अच्छा ये भी लिख सकते हैं, many great inventions they came during the war only. Necessity is the mother of invention. अच्छा, तो बैलेंस एक्ट क्या करेंगे? व्हेन द वायलेंस शुड बी शोन फॉर द ग्रेटर गुड एज अ लास्ट रिजॉर्ट. सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट रिजॉर्ट, ग्रेटर गुड फॉर social welfare, not for your own welfare, but for establishing dharma in the society. Proportional होना चाहिए.
Basically, all the some ideas of just what theory you can write. All right. Let us do one more question. एक और कर ले. केस स्टडीज पे आऊंगा मैं. पूरा केस स्टडीज का पूरा सेशन लेंगे. इसमें है केस स्टडीज. नहीं नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस हैंड आउट विल फिनिश एंड देन विल मूव टू द सेकंड हैंड आउट. Like to live is the rarest thing in the world. Most people exist. That is all. Oscar Wilde. किसका basically what this quote is about? Well, Tanmay, the handouts had already been uploaded on the website. Okay, so from your app you can download the handout. Do we exist or do we live? Civil services candidates, they exist or they live. They should live. But when they fall in this trap of existence, I think that is where they go wrong. They stop living while preparing. देखो होता क्या है, what Sathe has said, that human beings first of all exist, and then one day they realize their existence and they start willing, and then they become what they will. Have you understood this thing? नहीं as much. In the initial 4 or 5 years of your life, you just exist. You are just a nascent biological entity, nothing else. You are completely dependent on others for feeding, for basic body work. So that is a period of survival, existence. But then at the age of 4 or 5, somewhere you get awareness about yourself. No, you become aware that you are also one entity who exists in this world. आता है ना, some you gain consciousness about your identity. So that happens somewhere around the age of 5 or 6 maybe. Okay. So first of all you exist, and then one day you realize your existence. That yes, I am something, I exist. And then you start willing. फिर आपको क्या करता है कि I should get video games, I should get this bat, I should get this thing, that thing. Okay, you start willing. And then you become what you will. So basically, human beings are nothing but the product of the choices they take in the past. आपने cricket bat will किया, so maybe in the future you become a cricketer. You will for books, so maybe in the future you will become an educationist or let's say a civil services officer. It all depends upon the choices that you make in the past. And through your choices, you renew your life. No, आपकी life नहीं. Abhi you are in college. You decided I will prepare for civil services. You are sitting here. So you add another dimension to your life because of the choices that you make. And when you keep making choices, it means you are living. If you stop making choices, it means you are existing. Simple idea है. ये basically free will approach है साचे का. We call it free will approach. देखिए, this is also a debate. Free will versus cosmic determinism. हाँ, चरवाका तो देखो उनका अलग है. वो तो कहते हैं कि देयर इज ओनली वन लाइफ, सो एंजॉय इट टू द फुलेस्ट. दे डू नॉट बिलीव इन कर्मा, दे डू नॉट बिलीव इन रीबर्थ. तो उनका सिंपल फिलॉसफी है. बट दिस स्कूल फ्री विल अप्रोच इज इन कॉन्ट्रास्ट विद द नियति आजीविका स्कूल.
which says that everything is destined, nothing is in your control. So two contrasting schools are there. First is Free Will Sate, who said that everything is in control of human beings, we make our own destiny. And the other school is Niyati or fatalism, which says that nothing is in human hands, everything is decided by destiny. So if this question is asked from you, that whether you believe in destiny or not, what will be your answer? Destiny is there, but it is given by even Lord Krishna in Mahabharata has said. In fact, after the end of the war, he went to Gandhari and said, you should not feel sad, everything was predestined. See who your parents would be, what kind of situation you will come in, what kind of paper UPSC will set. All these things are decided by destiny. Okay, things which are not in your control. But how you respond to those situations, that will be decided by your free will, by your actions. So this is where you can balance things out. And you will be judged not by the situation you got, but you will be judged by the decisions that you made in life. That Karna, he got many hostile situations in life. But because of the situation, he took the side of Adharma. Okay, he became loyal to Duryodhana. And his end was tragic. You're getting my point? Even Krishna faced many difficulties in life, but he never left the side of Dharma. Arjuna, Pandavas also faced a lot of crises in life, but they never left the side of Dharma. Are you getting my point? So it is not about how the situation comes in your life, it is about how you respond to them. And that thing will decide what kind of life you will get in the end. Whether you will be able to achieve your moksha or not. I hope you're understanding this thought process. So if this question comes in exam or let's say in essays, you have to balance things like this. You can give example of Stephen Hawking. I mean, his whole body got paralytic and yet he ended up discovering so many things. Okay, you can give example of Srinivas Ramanujan, 33 years of age he died, yet he made significant contributions. So yes, you have to balance destiny with free will. Many things are there which are not. Stoicism भी यही कहता है. Stoicism, what it says, that you have to stay in harmony with nature. There are many things which are not in your control. बताइए आपके कंट्रोल में क्या क्या नहीं है. Yes, what is not in your control? Results, opinions of others, future, past. ये सब आपके nothing. Situations. These things are not in your control. What is in your control? Hard work, your intelligence, your thoughts, your emotions, your decisions. These are in your control. हाँ, जैसे लाइफ और डेथ भी लिख सकते हैं यहाँ पे. लाइफ, डेथ. यस प्रीति. नेचर, हाँ नेचर में मेनी थिंग्स आर देयर. लाइक कोई कैटास्ट्रोफी हो गया, कोविड आ गया, COVID-19, इट इज नॉट इन योर कंट्रोल. See, again, many times it's a matter of attitude. Okay, even if you get COVID, but how you respond to that situation. If you're optimistic, chances are high that you will come out of it. But if you become pessimistic that life is gone now, then chances are high you will end up on the deathbed.
तो ये, हाँ वो तो मैन मेड डिजास्टर है ना, बट अगेन सी देयर आर मेनी थिंग्स विच आर, जैसे होता है, एक होता है, दो दो जोन्स होते हैं, जोन ऑफ इन्फ्लुएंस एंड जोन ऑफ कंसर्न. ओके, लाइक जोन ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, डेट वेदर यू कैन बिकम आईएएस ऑफिसर्स और नॉट, ये जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है. बट व्हाट इज हैपनिंग एट रशिया यूक्रेन लेवल, दैट इज ओनली योर जोन ऑफ कंसर्न. You can't do much about it. It is not in your hand, right? So we have to we have to differentiate between these two zones. हाँ, climate change वगैरह तो yes, we can change it by making our own contributions. We can do it. So existence का देखो क्या क्या basic characteristics होते हैं existence के. देख, there is no aim in life. कोई aim नहीं होता. Pessimism, no aim, pessimistic approach, स्टेटस को मेंटेन करते हैं ऐसे लोग. नो इनिशिएटिव्स आर देयर, नो लर्निंग इज देयर. कंफर्ट जोन, सच पीपल दे रिमेन इन देयर कंफर्ट जोन. जबकि लिविंग का क्या है, ऑलवेज लर्निंग न्यू आइडियाज, नॉलेज, गेनिंग नॉलेज, हेल्पिंग अदर्स, altruistic, being altruistic, learning from mistakes, yes, moving forward, making decisions, showing passion in life, passion showcase करना है, being happy in life, most importantly. Optimum utilization of your potential. Mother Teresa, Mahatma Gandhi, these people lived, but most people in India, they just survive. They just exist like an animal. हाँ, pursuit of happiness, you can write that example from there. Pursuit of happiness. Keep learning. That is the most important thing. और यही सिविल सर्विसेज का है. फॉर मेंस एग्जामिनेशन यू शुड बी लिविंग रादर देन एग्जिस्टिंग. यू शुड बी हैप्पी. हैप्पी, जैसे कहते हैं ना कि वंस वी विल बिकम एन आईएएस देन वी विल बी हैप्पी, बट देन ऑल्सो यू विल नेवर बी हैप्पी. वाई? बिकॉज अच्छा फिर आईएएस बन गए, नाउ व्हाट कार्डर आई विल गेट, देन विच डिस्ट्रिक्ट आई विल गेट, विच पोजिशन आई विल गेट. अच्छा वो मुझसे बड़ा था, ही बिकेम कैबिनेट सेक्रेटरी, आई डिडंट. सो दीज थिंग्स विल कीप ऑन हैपनिंग. So happiness is, success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. When you will start feeling happy, then your probability of of success will increase. Okay. So first become happy and then success would be yours. All right. So we'll end here. ठीक है, फिर कल की क्लास में we will continue with this handout. Case studies also we will do, and then if time permits, then we will move to the second handout also. Okay, chaliye, thank you very much. About psychology, unit 2, 3 and 5, it has been uploaded on the app. So from app you can take it, or at least look at the questions which are remaining questions which are there in the handout. Okay, and try to write some answers also. Okay, to the questions that we have discussed. Thank you. All right, thank you. All right, guys. Online guys, thank you.